Visible. Is it visible, sir? Yes, sir. Okay. Uh, so now I'm going to Continue, start, sir. sir. Continue. The topic of today's discussion is internal migration in India, some reflections of migration during COVID-19 lockdown period. Uh, First of all, as sir has already given a brief introduction about me, I am from Banaras Hindu University, Geography Department, Institute of Science. So my topic is going to cover a few of the important segments where we are going to trace out how this migration can be linked up with the latest available data of 2011 to this latest scenario of COVID-19. So my topics are going to cover understanding what is migration, what are the available data sources which are there to which we are dependent upon for the knowledge and for getting information, then driving forces, especially this has been contributed to Lee's model of migration, then the types of migration. We are going to discuss about the streams of migration, also some of the internal migration reflections, and the latest reflections of migration which has been taken place in the recent pandemic lockdown time period. So first of all, when we talk about what is migration, generally it's a general perception for all human beings that if somebody is moving from one place to another place, it's been considered as migrant. Now, the question is, there must be some kind of spatial movement, spatial changes in the place of residence, or generally we termed it as usual change in the place of residence. So, if someone is moving from one geographical location to the another geographical location, we termed it as migration. This migration can be within the boundary of a country. Like in India, if somebody is migrating from one corner of the country to the another, that maybe depends upon whether moving from rural area to urban or from urban to rural, or maybe in other context. That we called internal migration. And when somebody is moving from uh, out of the country's boundary, we call it international migration. But here it is very important to understand whether this migration is similar like commutation or traveling. Say for example, if I'm doing work somewhere and I'm coming back to my home or to my house again in the evening, whether that been considered into migration or not, whether traveling has been considered into migration or not, this is one of the basic questions which come into the mind. Census is very clear about it. Census said if somebody is moving in a very localized manner, say for example, if one is moving from one apartment to the another apartment, that is not a migration. If somebody changes house from one house to the neighboring house, that is also not migration. So if somebody is changing his house or within that village he is making a movement, that is also not considered migration by the census department. Or say in case of urban area, if somebody is moving from one ward to the another ward, that is also not migration. So hence it is very important for us to understand what is exactly migration. It must involve some spatial changes, number one. Number two, it at least have some kind of movement which is relatively consider some space. Within that boundary you cannot consider it as migration. Or if somebody is moving and going and coming back to this home place, that is also not migration. So now what are the important sources of data which are available there with us? The biggest largest source of data is census of India. In census of India, migrations tables of D series are available, that is from D1 to D13 tables are available, and from where we can get the data. But the biggest problem with the census department is that the latest census department migration tables are not released until I think up to 2017 itself, for the last census which was taken place in 2011. So the data which is to the real time data is not available. But since when we call that we need a data, the important authentic source is census department. The second important data which has been collected and available is NSS, so National Sample Survey Organization. I think the latest available data is 2007-8 data is available. But the more latest data regarding the census is 2011 data is available, right?
As I have already given in my PPT, that I am going to discuss some of the forces, driving forces, why this migration is taking place. When we talk about pull and push factors or pull and push forces, suddenly something came into our brain, in our mind, that okay, somebody has been pushed, and that person is pushed by some of the factors and moving, or attracted by another factors. So both these forces work together. Here I would like to uh, give some of the light which has been given by Lee in his model. What Lee says, there is a place of origin, there is a place of destination. What he said in both these places, in place of origin as well as destination. Origin means from where you are, basically, whether you have your last moment was there or your place of origin is there, but the choice where you want to go, that is a place of destination. So from place of origin to place of destination, you have n number of opportunities. So depends upon what side, either origin or destination, has pull factor more stronger or the push factor more stronger. What Lee said, in between these two places, say for example, if I am moving from Chhattisgarh to Delhi for a job, so my place of origin is Chhattisgarh and I'm moving toward Delhi. So in between there are intervening obstacles are there. What Lee said, that can be lack of transportation facilities, may not be available, inaccessibility, may have terrain or rugged topography, or some kind of restrictive immigration laws or rules or regulations. So in between these two places, these are also termed as intervening opportunities also. Say for example, I want to go to Mumbai, but in between, suppose I first travel to Delhi, and there in Delhi I find some of the work opportunities. I'll stay over there for some time. But my route was, I was preferably wanted to go to Mumbai via Delhi. So in between, Delhi has become an intervening opportunity for me. That's why I stayed some of the time over there. I couldn't able to reach to my destination. In between, intervening opportunities are very, very important. What Lee said, that is also important one. Number of migrants moving सिंह from सर, one सिंह place to सर, another place. हाँ, आपका स्लाइड स्टिल नाउ पीपीटी नंबर 2 ओनली. It's not moving. नो, अब प्ले कीजिए उसको. Is it moving, sir? नो, हाँ, Kindly अब tell me. अभी अभी ठीक है, कंटिन्यू. Okay. उसको उसको So, नेक्स्ट की नहीं किए, आपने प्ले कर लीजिए पीपीटी को, बेस्ट रहेगा. uh, okay. Now is it visible, sir? हाँ, विजिबल विजिबल Right, बट. right, right, sir. हाँ हाँ, I'll try to, व्हेन यू please विल टॉक kindly नेक्स्ट स्लाइड तो let me know ऑटोमेटिकली if दैट such चेंज. kind of situation exists in this digital mode. Okay. So when we talk about the number of migrants are directly proportional to the extent of the opportunities which are available. Now, opportunities attracts, and it is inversely proportional to the intervening obstacles. Say for example, if somebody feel, okay, I am having hindrance to go to that place, why don't I find a good opportunity over here in my local area, he or she will never move. So moving to the next slide, some of these pull and push factors I have listed. In push factors, which pushes the human being from one place to another place, are including few services, not services available, lack of job opportunities. That's why biggest one of the biggest reason. Say for example, if somebody is not getting any opportunity, job opportunity, to find out good opportunities or good jobs, he or she will move. Unhappy life, poor transportation facilities or no transportation facilities, somebody wants to have good infrastructure, or maybe natural disaster in case it happens in during lockdown period. What happened is that was a kind of local sorry, that was kind of natural disaster during which people moved. So someone can say that some of the push forces worked upon the migrants, and the war kind situation, shortage of food, which was also one of the biggest reason. That suppose I was staying at a one place, but I am been forced, I am not getting the food, I'll try to be pushed to from that area to the another area. And some of the factors which are very important, which pulls, maybe accessibility of services, better job opportunities, more entertainment,
better improved condition, and family links. Sometimes we are also attracted by the family links. Okay, I am staying in this area for the last so many years. Now I should move back to my family. This feeling is also important and played as a role of pull factors. Okay, broadly, if you divide migration, there are two types of migration. One is internal within the boundary of a country, external migration that is outside the country. So when somebody is moving within the boundary of the country, we call it internal migration. And the term uses internal migrant. And when somebody is moving from out of the boundary of that country is an external migration. It is termed as somebody is known as is migrated out to that country. As far as external migration is concerned, international migration is concerned, that is immigration and emigration. Immigration, when somebody is going to any country or in migrating to any country, for that, that migration is in migration. And emigration, when somebody is moving out. Say, for example, if somebody is moving from Punjab, Haryana, or Chhattisgarh to Canada, or to settle down somewhere in Europe, or in any country in Asia, that country is that migration is an international migration, and you called it immigration of that particular person. Now, as far as internal migration is concerned, this is divided into two segments. One is within the state, and another is one is within the country from one state to another state, that is termed as interstate migration. And second one is intra-state migration, when somebody is moving from one part of that state to the another part. Say, for example, one district to the another district, maybe from one village to the another village of another district, but within that state. So this further intra-state is divided into divisions and further into district level, that is intra-district or inter-district. So in this migration, the latest migration which occurred during this pandemic, it become very important for each one of us, that what happened to those migrants who were interstate migrants. Because somebody is residing and working in Mumbai but belongs to Chhattisgarh or belong to Uttar Pradesh, he or she is now stuck somewhere in another state. He or she wanted to move back from his place of destination to his place of origin back. So here it is very important to understand for us to interstate migration, but along with that we will also have a look on that what are the other growth of this intra-state or in other ways in intra-district or inter-district movements. So I'm having one slide concerned with that from the 1981 to 2000 latest available data 2011. It is very clear that the rate of interstate migrants is not very high. From 24.2 million population, which was recorded as enumerated as interstate migrants recorded in 1981, the change is almost double. 54.4 million population in 2011 was recorded as interstate migrants. But there is a big improvement in inter-district. That means it clearly shows that India's population is moving within that state. Most of the movement is within that state, and I would like to make it clear over here that most of the migration in India is concentrated from one stream, that is rural to rural stream, and most of this migration is of female migration. And the reason for that is marriage. So that's why the intra-district and inter-district, both these kinds of migration, internal migration in India is very high. When you talk about intra-district, within district, generally what happened, we try to look for the groom in within that district area where you have cultural similarities, where we try to find out, okay, somebody of our known is over there, we can have marriage of our daughter or a sister within that district, so that easy availability and transportation may be available. And there are other some socio-cultural factors are also there. That's why this kind of migration is very high in India. If you see the census data starting from 1981 to 2011, that's why we'll be able to see that 131 million population was enumerated in intra-district migrants. That has increased to 281.2 million.
That is graph itself shows a big high into that. No doubt the number of intermigrants were also increased during that phase. Now we are going to discuss about few of the terminologies concerned with these intermigrants and the data which is collected by the census department. So one is place of birth. So one somebody is born at a place that can be a rural area or an urban area. So classification can be done. Okay, so if I am born at a village or in a village area, I am a rural migrant. So my place of birth is rural. So the moment, so if I'm born at a one place within that country, so I'm internal migrant on place of birth. Or if I'm born in another country, on place of place can be rural area of that country or urban area of that country. So that will be an external migration. And as far as place of last residence, that data has also been collected. So depends upon how many movements a person has made. So when we talk about lease model, we are aware of that somebody may find an intervening opportunities. When somebody is finding an intervening opportunity from place of origin to destination, so he may have 2-3 moves. Say for example, if start my journey from Varanasi, I wanted to go to Mumbai, or I wanted to go to say for example Delhi NCR region for job, or for if in between I find an opportunity or a job opportunity somewhere in Lucknow or very close to Allahabad or maybe in Noida. So first I will move from my birthplace to the place where I have a job. Now when somebody is moved from one place of origin to his second place of destination, and later on he moved to Delhi, so his place of last residence was Agra, but his place of birth was Varanasi. So in that case, that is very important for us to trace out how many shifts or how many intervening opportunity that person has taken, or how many steps he has taken from his birthplace to reaching to the next place. So accordingly, that can be village also, or that can be town also. As far as regions are concerned, very clearly census department gives that there must be a reason like work and employment. That is the second one is business. Third one is education, marriage, moved after birth, and moved with the household. Any other reason? Say for example, somebody says that okay, I have moved for study purpose, or I have moved for, that will come under education. If somebody says that okay, I have moved for religious point of view, I wanted to live in that place, so that will be come under any other reason. But I'll tell you clearly over here that any of the migration which is in state level from one state to another state, if somebody is moving, that movement is particularly a kind of work employment movement. For a longer distance, generally male move more, and the reason in many of the cases reason will be work or employment. And as far as marriage is concerned, you might have seen in the previous slide that intra-district or inter-district movement is very high, and female are generally the having the movement from marriage point of view. Okay, as far as duration is concerned, they collect data less than 1 year. Somebody is staying at one place, 1 to 4 year, 5 to 9 year, 10 to 19 years, 20 years. Then and duration sometime is not stated. Somebody is not in a position to tell okay for the how many years I am over here. Some of the person may not. So this is the basic outline which is available to us as far as when we talk about the migration, internal migration in India is concerned. Broadly, when you say somebody is born in a village or somebody is born at an urban area, so accordingly you have four different streams of migration. One person who is moving from rural to urban, or maybe from one village to a nearby town or city area, that migration is rural to urban migration. And some of the studies shows that this is a contributing factor to the urbanization in the cities. Most of the people, those who migrated from rural area, they reside in urban area, and some those who didn't get an opportunity to settle down in the villages, settle down in the city area, they try to stagnate themselves somewhere close to the slum area, and development of slum is also associated with this. Then the second one is rural to rural. Rural to rural movement or migration is generally concerned with, I have already told you, females, and that is generally concentrated
with the marriage as a reason of migration. And when we talk about rural to urban, urban to rural movement, that movement or that data is very less, because generally people don't move from urban area to rural area. In case of when we talk about pandemic conditions, the reverse migration was there. So some of them, those who were there in the urban area of Mumbai, urban area of any, why I'm talking much more about Mumbai and NCR region, because these are the two most attracting places along with Gujarat. And then there are some corridors also from where the source region to that destination places people are generally moving. So urban to rural, that is also a movement, but at a very least scale. So urban to urban movement is also prominent because somebody want to move to a smaller city to the higher city, to the mega cities, metropolitan city, that will consider into urban to urban movement. Okay. Now, if you see the internal migration data as per 2011 data available, will be see that in all these cases, the number of 171 million person were recorded in rural to rural stream. This is the biggest stream. In rural to urban stream, 51 million, urban to urban 36 million, and the least one is urban to rural. Nobody wants to prefer to move from urban area or shahar to the villages area. So very less kind of population has been recorded as per all the data which is available to us. If we segregate and see in terms of male and female, we will be able to see clearly that in all the cases, see in this case, rural to rural migration, around 84-85%, somewhere around 84.81% are the female components. Largest number of female migration, and the reason is marriage. There, in case of rural to urban migration, the number is almost matching with each other, but here the upper hand is again to the females, because their number is comparatively more in this rural to urban migration. And in this case also, female number are also more than the male numbers. So in all these cases, you will be able to see that the females are comparatively migrating more. But the situation is the study concerned with the conditions of female, or the rights of these females, or maybe the as per the sustainable development goals which are there at a large scale. We are ignoring this biggest lot which is migrating from one part of the country to the another, or from one segment of any state to the another segment. So here we have the interstate migrants which are most vulnerable when we talk about pandemic has taken place. So one who is moved from one state to another state has been stuck because the state borders were blocked at that point of time. So they didn't get a time to move from one state to the another state, because they have already intercrossed that state. So in that case, you will clearly see the upper hand is again of rural to rural. Females are having the upper hand. And in this case, you will be able to see that in rural to urban migration, the number of percentage of male are comparatively more than females. Here you will be able to see that 41.8% female and 58.20 males are been recorded there in rural to urban stream of migration. See, in this case only, when we talk about that males are migrating for a longer distance, they cross the state boundaries, or sometimes they move along, and later on they sometimes bring their families along with them also. But they are the first initiators, they take the initiative, and the reason will, in most of the cases, will be employment or work. So in the next bar graph, you will be able to clearly see that this blue color is used for male percentage, this red color is for female percentage. We'll be able to see that in interstate migration, 2011 data shows that rural to urban migration, males having upper hand because they cross the state boundaries generally. So in all these cases, you will be able to see that female are outnumbered in all the streams, whether it's a rural to rural, whether it's urban to rural, or urban to urban.
But in rural to urban stream, from one person who is working in a village, residing in a village, wanted to do job in a urban area and metropolitan city, he'll cross the boundaries of state and will ultimately reach to the another state. So with the very quickly, and we'll move to the some of the data which is available in 2011 census. It has been found that nearly 450 million people were recorded as internal migrants. Somewhere around 37% of total population is migrating, and among them 99% were internal migrants on the total migration, and out of that only 1% was immigrants which were going out into the other countries. And it has been also recorded that in the last 10 years, 2001 to 2011, that population growth was somewhere around 18%, but migration rate was increasing 45%. That's why this is the biggest, one of the biggest topic which cannot be neglected. If they are moving from one place to another place, because constitution provides you opportunities, constitution provides you the freedom to move from one part of the country to the another part freely and reside there, settle there, and to have your profession also. So in that case, everybody has a freedom to move. So when you have a freedom to move, you can move. But in during the pandemic time period, situations become reverse, and they were the internal migrants stuck somewhere where they were actually. Now come to this next interstate migrants. That recorded data shows that 5.4 crore were recorded in interstate. So I'm talking about interstate means somebody is moving from Chhattisgarh to, again I'm giving it one example, Chhattisgarh to metropolitan city of Mumbai or Delhi. So he or she is a interstate migrant. 5.4 crore were recorded. UP, Bihar are the largest source from where the people move. Mumbai, Maharashtra, Delhi, NCR region are the largest receivers. So it can be also viewed in another perspective that the level of development in these two, or the opportunities differences are there. That's why people move from one state to another state. In among the same one, rural to rural stream, 21 crore migrants were recorded. Rural to urban stream and urban to urban street were having 8 crore migrants recorded. But urban to rural stream, which is the least one, 3 crore people were recorded. And it has been clearly shows that there is a quite variation. This is not clearly that okay, somebody is moving in a wave kind of motion from one part of the city to the another city. This variation is across all the states. 83 lakh resident of UP, 63 lakh of resident of Bihar were moved. The data shows moved either temporarily or permanent to the other सिंह states. सर, To the सिंह other सर, states. 60, sir. सिंह सर आवाज आ रही है? हाँ जी सर. सर मोर देन 5 मिनट में थोड़ा कंक्लूड करेंगे सर. Okay, I'll try to finish. I'll Okay. try to finish. I'll move little fast. So the 60 lakh people have been enumerated in my Maharashtra. So this was about the data which is available to us, and this is important for us to know that there are some kind of corridors which are existing. Bihar to National Capital Region, Bihar to Haryana and Punjab, UP to Maharashtra, Odisha to Gujarat, Odisha to Andhra Pradesh, and Rajasthan to Gujarat. These are the corridors which have been identified during this internal migration. Okay, now come to the main scenario which happened there in the last 1 or 2 years. Coronavirus came in India, and suddenly India locked down. When India locked down, what happened? The biggest problem for these migrants was that they become, within a minute, they become jobless, because everything was shut down and they didn't have anything. They were become jobless within a minute. Why? It is important to understand about they become a jobless, because most of the migrants, whosoever is moving from one state to another state, they moved as a migrant to do work over that state, or in other ways they adopt migration as a strategy of livelihood, because their life is dependent upon that. As per International Labour Organization's latest 2020 policy brief, they said that younger workers with less experience are very easier, cheaper to fire. You will be able to see in this image
that has been taken from one news. uh, Adnan Abidi has taken this picture because during lockdown period nobody was able to move out. So hence some of the pictures which were there available in open sources have been taken over here. So youngest of the lot which were preparing to move back to their country. So you will be able to see that when people doesn't have job, they don't have food to eat, they will strive to move back. And somewhere around 200 million people were affected a lot with this coronavirus. And it has been observed that after the partition of India, the biggest, largest movement was taken place during this COVID-19 period. And there is hardly any history in India that because of any epidemic that such kind of largest scale exodus of migrants might have taken place. As per RB Bhagatji 2020, they said this is the biggest stream of migration who were returning back to their home. So why don't we study on that data? Why don't we discuss all these which was there at a large scale? As per government data, 1.1 crore people were migrated during this tenure back to their home, reverse kind of migration. And if you see that this is the biggest than the population of Uttarakhand itself. So I like to mention over here that why these migrants are important, because they are the important segment of informal economy. And somewhere it has been also studied that 10% of their contribution there is in the GDP. They are working in informal sector, but their contribution to this urban area is very, very high, cannot be neglected just by saying that okay, these are the migrating lots. So what happened, the first incident take place in Badra. Many of the persons get together at Badra railway station in the hope that they are now wanted to move back to their state, home state. So again, push and pull factor worked over here. What push factors? High cost of living in urban area. They don't have job because of coronavirus. No earning source was there. They have lost their jobs also. Uncertainty about when this coronavirus will lift up. There was no as such rule that what will happen to them. Again, these were the push factors which affected them. But some of the factors which attracted to back to their area, like Rabi crop harvesting was there. They were able to see the prospects in Manrega. Okay, they will get a job over there back to their home also. Joining their family back to their home. They were in a desire to move back to this. So push and pull factor again played their role. I'd like to display some of the highlights. People walked thousands and hundreds of kilometers by foot only. This is then again a picture by foot they were moving. Some those who were not able to get anything were moving day and night. Even if it is in night time, they were moving day and night. And you will be able to see some small children were also moving along with them. This is again a picture. Somebody were in a position to manage, okay, on a rickshaw puller or a vendor's kind of mode of transportation, whatsoever they were in a position, but covering a thousands of kilometer area they were moving. Some of them could manage to board on a truck, those who were doing work during emergency time period. And this is a beautiful picture which I have taken from the open source available on net. This shows that migrant workers cycling from Chhattisgarh, from where the conference has been organized, from that to Prayagraj to UP. They found a means that okay, they can move where they cycle. They moved. They started their migration. Some of them got an opportunity to travel on a truck or board on anything. They moved. But at last, government thought they should move or they should reach to their place of origin. From destination they arranged some buses. But what happened, large number of people were on the roads and they were standing in a queue. The beautiful picture taken in Delhi NCR region, that government arranged something, but anyhow they could not manage such a big large scale people, those who were there in Delhi. The same picture taken from Hindu, they also shows that they were trying to move to back to their houses by one way or other way. But what happened, they got infected because of this coronavirus. Close contact in the buses, close contact in the Shramik trains get infected. So Singh they sir. try to manage it. Just I'll take 2-3 minutes. Okay, So okay, okay.
they were also in a position, in a very bad position to manage it, to have an food also. The condition was very pathetic for them. I'll share 2 3 pictures more. The conditions for children was very worst, and UNESCO has said in this case that at least Supreme Court has also given a direction in this case, that Supreme Court want that all the states give at least them data that how much fundamental right has been violated of children during this coronavirus, especially the migrants. See the condition of these children, whatsoever and howsoever their parents were moving, they moved along with them. And those who were able to move back to their states, government data says that 32 lakh in Uttar Pradesh, the largest, reached back. 15 lakhs in Bihar, and 13 lakh at least were able to reach back to the, this is the government data, official government released data, but data pertaining to this may not be in the real sense. It will be bigger more than that. Some psychological impact were also there. I will highlight only one point over here. Migrant who could able to manage back to their area, but they were also suspected, okay, you are coming from Maharashtra, you are carrying a virus along with it, so you are not allowed to reach, you are not allowed to meet your family, you stay away. So psychologically they are also been affected at both the place of destination, at the place of origin also back. So in concluding remarks, I would like to say that they are the important segment, they are important contributor to the GDP in informal sector of economy, they cannot be neglected. Second, the sudden imposition during lockdown period, they couldn't get a time to manage and couldn't get a time to arrange the things. Thirdly, the internal migrants, especially the seasonal and the temporary migrants, affected a lot because they were not permanent, and landlords were not in a position to give them money because they were having that, okay, if I'll give you money, you may or may not come back to my work. But still there is a largest, the third, fourth, last conclusion is largest problem is that the real time data is not available. The nodal agency is not there as such which can collect the data during this such kind of pandemic lockdown time period. Thank you very much to all of you for listening me and giving me an opportunity to have an interaction with all of you. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने वेरी एलाबोरेटली एक्सप्लेन किए. वेलकम पीएल चंद्रकर सर, मेरा गुरुजी आ गए हैं. नमस्कार सर. और मैं समय नहीं लूंगा. एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? चैट बॉक्स में क्वेश्चन मैंने पूछा था, बट ऐसा कोई क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिला, और सर ने ऐसा अच्छा एक्सप्लेन किए जाकि क्वेश्चन करने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि इतना वेरी नाइसली एक्सप्लेन एंड इलाबोरेटली explain overall the thoughts, migration in India, some reflection of migration during lockdown, railway station, all over the rural urban migration, very nicely explained. Direct thank you sir, Dr. Harpreet Singh sir, thank you very much for your valuable time for this seminar, today's national seminar, Department of Geography, Chaitanya College, Pamgad, Jajgir Chapa, पूरे कॉलेज के तरफ से, कॉलेज के परिवार की तरफ से नमस्कार सर. और हमारे thank you very much sir for giving me this opportunity to speak few words on it. Hope I could make some of the points, relevant points into this, especially a topic which is concerned with the migration and the impact of migration on environment and economic development of Chhattisgarh, though it was not concerned directly to the Chhattisgarh, but anyhow it's in part of India itself, and lots of people are migrating across the states also. I'm thankful to the whole team. I'm thankful to the Chandrakar sir. I'm not aware of all the names, but I am thankful to whosoever is. Ramkrishna sir is also available over here. I'm thankful to giving me an opportunity to speak about this topic. And at the last, the whole organizing committee, the convener, the patron of this seminar, the co-patron of this seminar, to all, I am highly obliged and thankful for giving me an opportunity. So kindly now allow me to leave this so that I can join the next session. Okay. No sir, actually आपका इसके बाद आपको रहना है सर. टेक्निकल सेशन 5 में आप एज ए को चेयर पर्सन भी करेंगे, जिसमें
प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद सिंह सर चेयर करेंगे। Link will अब be हमारे the साथ same for that, sir. इसी लिंक में Okay, आप जुड़े रहेंगे। मैं right, सीधा sir. I'll be there. Thank टाइम you. कम है सर, थैंक यू सर। मैं डायरेक्ट मैं जाना चाहता हूँ ऑन ऑफ एनर्जेटिक प्रोफेसर रामकृष्ण माइती from Vidyasagar University, West Bengal. You know, this university, one of the leading ranking university in our India, and also he's the all parameter of geography and one of a great person, also academician, Professor Maity. And you know, Maity is very energetic, and he's not a Indian geographer. He's also international geographer in our here present now. And also at present, principal sir, namaskar. I over to you, Professor Ramkrishna Maity. I would like to invite in this seminar, and must will start in your special lecture, special dimension of pandemic and livelihood challenges. Over to you, sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Continue. Let me share my screen at first. My screen is visible now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So at the outset, I like to thank the college authority, Chaitanya College, Pamgod, for inviting me and to give a chance to share my vision or to share my understanding with you with this fantastic gathering of this morning. I'm thankful to Dr. Narendra sir for inviting me to share my understanding on this pandemic situation and livelihood challenges. So first of all, my structure of today's discussion is how pandemics are geographically related. There are lots of pandemics. There are the history of pandemics, and I will start with the black flu, Spanish flu, and the recent COVID-19, and how the geographers, we have the opportunity to deal with those pandemic situations and to study those pandemics, and what are our dimensions, the spatial dimensions, in relation to migration and trade, and then if those spatial connectivity is locked during lockdown, then what would be the challenges to the rural livelihoods? Okay, so let me start with the Black Death, the plague that happened in the 14th century, and you know that these are the affected areas near surrounding the Mediterranean Sea, and those pandemic was spread by the ships which carried the trade and transport in those regions, and this trade, that means this pandemic is spread over a spatial domain, over this spatial domain by the say physical connectivity through the ships. Then in case of Spanish flu, which occurred just after the First Great War, and the entire episode of this pandemic affected 1/3 of the then world population, and those were carried by the soldiers. The soldiers, fleet of soldiers, say carried from one part of the say globe to other, and they carried the viruses, and ultimately the one-third of the global population was affected, and there was a casualty of 17 to 50 million people. Okay, so these are the different waves, second wave, third wave, how the pandemic was spread world over. And these are the countries of the world which were affected by those Spanish flu. So my concern is how the spatial connectivity within those regions, the physical connectivity between the regions of the world are responsible for this spread of pandemic. If we come to the global present global issue of COVID-19, these are the regions. These are the regions are being affected. Almost all part of the world are being affected, and with a total casualty of more than 56 lakhs, nearly 57 lakh people. Okay,
And USA is the first ranking country which has affected most, followed by India and Brazil. So what are the geographical explanation of those countries being affected? Why USA is affected more, and why India is also affected? If continent-wise, if we analyze the case of effect, says as a COVID case, then Europe is affected more, followed by Americas and Southeast Asia. Then the spatial interaction between the regions are in the form of migration of people. People migrate from one region to other. There are the diffusion of ideas from one region to other, and there are the spread of goods or transfer of goods from one region to other in the form of trade. So migration, diffusion, and trade are three main pillars of worldwide development, and we are presently in the situation of globalization. That means all part of the globes are highly connected. So according to my view, that this high level of connectivity is the main cause of say speedy spread of this virus COVID-19. So if we see the case of international migration, nearly 272 million people, that means 3.5% of the world populations are international migrant, and their figures are continuously rising since 1970 to 2019. Then according to International Organization of Migration, their volume is increasing. And what is the position of India in, say, international migration? India ranks first as the country of origin of international migration. It has a volume of 17.5 million people of international migrant, followed by Mexico and China. So if those migrants come back to our country after these COVID cases, then what would be the situation? It could be say easily apprehended. So according to the immigration destination, USA is first, and according to the countries of origin, India ranks first. So the major two COVID affected cases are, the first one is United States, followed by India. So this international migration and their returning home are the major causes for the spread of migration in India. And if you see the corridors of migration, then you see most of the countries, USA is the most important destination. Europe is also the most important destination, and that's why Europe and America are more affected in COVID-19. According to trade also, USA ranks first, followed by China. And if you see the recent dominance of trade, world trade, these are 20 fastest growing trade lanes. And in those trade lanes, you see what is the dominance of China. China dominates in 18 fastest growing trade lanes out of these 20 trade lanes. So these are the trade routes, dominant trade routes. So 17 in 17 trade routes, the China dominates. So if any virus originates in China, it will not take much time to spread world over. What is the level of global connectivity? I told you that we are in the age of globalization. We are getting benefit out of globalization. So it is the negative impact of globalization. You see the level of global connectivity. Nearly more than 58,000 flight routes are there. Only if you see the aviation routes. So where those are concentrated? Those are concentrated in Americas, USA, and European countries, and this part of the globe. So which are mostly affected by the COVID cases.
So if such a virus originates at any part of the world, it will not take much time to get spread over world over within few days. So this high level of global connectivity is mainly responsible for spread of these viruses world over. So these are the trade routes. Yeah, surface trade, surface transport routes. It is also very intensive and high volume of surface transports are also there. Now, if this connectivity is affected due to lockdown after COVID, then what would be the impact on livelihood? Here, livelihood considers all the means of securing basic necessities, and it includes all the activities which are essential to everyday life. And what are the common rural livelihood options? Farm activities, non-farm activities, tradings, rural handicapped activities, off-farm activities. So these are the various sources of income. And here I like to put emphasis on the income sources, how they run their livelihoods. So these are the basic sources of household income in the rural areas. But after COVID-19, how those household income sources are being affected? In farm activities, cash crop productions are limited, and they couldn't sell those cash crops in the market. Subsistence crop selling are also affected. Rearing and selling of the animals are also affected. Aquaculture has been badly affected. In non-farm activities, construction work was stopped. Gold and jewelry industries, the small-scale industries are being affected. Bricklaying industry has been stopped. Maid servant, we are not allowing our maid servant to enter into our households due to this, from the fear of this COVID-19. Rickshaw pulling has also been stopped. Trading, cow dung trading, popped rice making and selling, all are also being affected badly. Rural handicapped industries, handloom, beadi making, net making, these are also being affected. Agricultural labor, during the harvesting time or plantation time, the agricultural labor moves from one part of the district to other in groups, but that movement has also been stopped. Natural resources, they are not allowed to enter into the forests also. Charcoal, fuel wood, wild fruit, they couldn't collect. And they cannot go for extensive fishing in the rivers or coast because those options are also been stopped. So these are a very dark situation, or very pessimistic situation which are observed throughout the rural areas in India and this part of the country. In case of the assets, livelihood assets, the natural capital are been affected. They couldn't get access to the livestock and biodiversity in the forest areas or in in their surrounding environment, because their movements are being restricted. But their environment, ambient environment, has been improved a bit, but that environment doesn't help them to get their livelihood options, get back their livelihood options. Physical capital, which enhance their ability to earn, are mostly unused. Tools and equipments that they have are mostly unused. They cannot use them. The road and bridges are closed down. Markets are closed. Healthcare facilities are also been inaccessible, because mostly those are interrupted. Only attention is given to the COVID patients. Human capital, health and ability to work are also being affected due to malnutrition. If you can't earn sufficiently, you cannot
so your food security has also been affected. And if you cannot get food, you will be malnourished. Their experience and knowledge and skills are being unused. Educational institutes are being closed. So that means the future training and education, future prospect of the labor forces are also being affected. The financial capital, they can sell part of the productions, but there is no buyer because markets are closed. Locally, they may sell some products, but if there is no wholesaler, if there is no buyer, and if there is no export, they cannot get sufficient time. They don't get sufficient value of their productions. Cash crop productions are also stopped here. Social capital, we imposed social distancing. That means that cooperatives, self-help groups, and mutual exchange and support are also being interrupted. So in all the ways where from the rural people gets their earning and gets their support are all closed. Then remittance from the migrant labor, international remittance, India ranks first to get this remittance out of the international migrants, followed by China and Philippines. This has been interrupted. This has been reduced much. And in case of domestic migrant, Dr. Singh has elaborately discussed that between 2001 to 2011, population grew by 18%, but number of migrants increased by 45%. Now we have, in 2011, we have 455 million people of migrants, which was 144 only in 1961. So there are numbers of migrants, and all those migrants are coming back to their home. Railway has carried more than 50 lakh migrant workers by Shumik special trains. Okay, so these are the plight of the people, and these are the sufferings of the people, the migrants. We all know those things. And at Ghaziabad, this was the gathering of the migrant, domestic migrants for coming their home. So what are the challenges? Migrant labor returned home, but they don't have alternate job. There is no lockdown or there is no transport facilities. And if there is no transport, you cannot exchange. You cannot exchange your product. You cannot transfer the products from the place of production to the place of demand. That means trade has been totally affected. There is no wage work. The contractors and others, they couldn't absorb much of the laborers. Institutions, local institutions like cooperatives, self-help groups, panchayats are mainly inoperative in those periods. Entry into the forest is restricted, so the provision for NTFT collections are also affected. Grazing in the pasture land is also restricted due to the restriction in movement. Collection of raw materials, marketing of produces for rural handicapped or cottage industry is affected. Now, how can we go back to our earlier situation? How can we improve our situations? So there should be some local scale initiatives. Proper institutional initiatives from the cooperative or self-help groups are to be there to revive the situation. And there should be a long-term investment for improving physical environment like land, water, soil, and vegetation. You know, these are the basic resources on the Earth's surface, and they give the fundamental support to the rural livelihood. Land, water, soil, their quality has to be improved. And you know, there are lots of techniques available nowadays, but it requires proper initiative. PDA support should be more stronger, and local government should start the resilience building initiatives.
NREGA support should be revamped. Maity sir, excuse me. Yeah, only 1 minute I told. Okay, Only 1 minute. okay. Sorry, sir. So income opportunities are to be diversified. There should not be single or one or two income opportunities. That should be diversified options are there. We have to harness those. Rural and cottage industries, more facilities are to be given for the rural and cottage industries. And for the farmers, the best prices are to be ensured. And here lies the importance of local government. Okay. And in case of global, how globally we can be resilient, we should be connected more. This connectivity in the earlier part of my lecture, I told you this connectivity is responsible for this COVID pandemic. But again, through those connectivity, we can recover. According to Altman, the swift recoveries of trade and other flows highlight how international connections expand our capacity to overcome the challenges. We can overcome this challenge through the connectivity. Today we are organized in a digital mode. So that means it's a connectivity. We are harnessing this connectivity to share our options, share our feelings and understanding. So this type of connectivity, that means the virtual connectivity has to be increased. And through those connectivity, again, we can come back and we can recover from this situation. Thank you very much. Thank you, sir. Professor Maity, one of spatial speech, spatial interaction, country-wise distribution, also spatial dimension, world migration, and also you explain world migration and current data. Thank you, sir. And a global pattern 2019 also, and international migration, and also there are the global connectivity, and you are elaborately explained, and it is very one of the great lecture after हरप्रीत सिंह सर इज वेरी, आपने भी बहुत अच्छा से बताया, और हमारे रामकृष्ण माइती सर भी इतना अच्छा इसको एक्सप्लेन किए। ऑडियंस को मैं ये बोलूँगा, अगर कुछ पूछना है चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे लिख रहा था, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि हमारा जो स्पेशल लेक्चर माइती सर ने दिए उसमें कोई क्वेश्चन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतना अच्छा से सिस्टमेटिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया। और मेरे ख्याल से इस पेंडेमिक में हमें क्या दिया, हम बहुत सारे खोए हैं, हम सब लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन में झीले हैं। कहीं ना कहीं माइग्रेशन सर ने इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया, वर्ल्ड माइग्रेशन distribution on European country and in our India overall, not only India, and he explained the overall country. Thank you sir, आपने इतना अच्छा से हमें, और आपसे तो सुनने का मौका मिलते रहेगा। हमारे चैतन्य कॉलेज परिवार आपको निरंतर याद करेगा सर। और So thank you very much. Thank you. I like to extend my sincere thanks to the organizers for inviting me. So thank you again. Thank you sir. मैं another speaker, Dr. P L Chandrakar sir, are you present sir? P L Chandrakar sir, please अपना माइक को ऑन कर लेंगे। हाँ ओके, हाँ नरेंद्र सर नमस्कार, प्रणाम लीजिए। नमस्कार सर नमस्कार। मैं अबाउट पी एल चंद्रकर सर के बारे में जितना ही कम बोलूं उतना ही मतलब कि समय बहुत कम है। हमारे गुरुजी है, मेरे को पढ़ाए हैं, और सर के मार्गदर्शन हमें मिलते रहा। कभी सर ने माना नहीं करते हैं, मैं रात 12 बजे भी सर को कॉल कर देता हूँ, कभी शाम को कॉल कर देता हूँ, कभी सर के रेस्ट के टाइम में भी कॉल कर देता हूँ, फिर भी सर ने कभी माना नहीं किए। सर हमेशा इंस्पिरेशन देते रहे, और ऐसे छत्तीसगढ़ पे वन ऑफ ग्रेट एनर्जेटिक प्रोफेसर पी एल चंद्रकर सर, जिन्होंने वर्तमान CMD कॉलेज पामगढ़ नैक के ए कैटेगरी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और जियोग्राफी डिपार्टमेंट के जिसका नाम सिर्फ भारत में नहीं
जिन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में स्पीच दिए हैं, साथ ही साथ किताब लिखे हैं। 15 से अधिक उनका किताब है, और अमरकंटक लेके छत्तीसगढ़ के बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर में इन्होंने काम किया, और जिसमें शहर के एकदम ग्राउंड लेवल में जाके उन्होंने काम किया। तो मैंने समय को कम रहते हुए मैं सीधा सर को इनवाइट करना चाहता हूं, प्रोफेसर PL चंद्रकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, CMD PG कॉलेज बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Evaluation of migration in the tribal area of Chhattisgarh State. It is very important issue, and I over to you, sir, Dr. PL Chandrakar, sir. थैंक यू डॉक्टर नरेंद्र। मुझे इस सेमिनार में भाग लेने का आपने अवसर प्रदान किया, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि चैतन्य कॉलेज के डायरेक्टर और प्राचार्य महोदय को, जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन छत्तीसगढ़ के प्रवास के संदर्भ में सेमिनार आयोजित करके किया है। और साथ में इस सेमिनार में, इस सेशन में जुड़े हुए वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, जो काफ़ी, जिनका नाम है प्रोफेसर आशीष सरकार सर, और अभी के इस मेरे पहले के वक्ता रामकृष्ण सर, उनको मैं पूरा सुन रहा था। बहुत अच्छा उन्होंने पेंडेमिक को लेकर के और प्रवास का जो जोग्राफिकल एस्पेक्ट है उसके ऊपर में व्याख्यान दिया। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मेरा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ माइग्रेशन इन ट्राइबल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसमें 32 अभी ज़िले हैं, और उसमें से 25 ज़िले ट्राइबल हैं। हाँ, सर वहीं से प्रेजेंट कर रहे हैं PPT? नहीं, आप करेंगे, मेरे कंप्यूटर से ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आप करिए ना प्रेजेंट। 25 ज़िले यहाँ के ट्राइबल ज़िले हैं, और कुल 146 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं। उसमें से 85 डेवलपमेंट ब्लॉक ट्राइबल ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है उसमें से 32% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। और वो जो ट्राइबल है यहाँ के, वो 42 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। और ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर यहाँ के ट्राइबल को, जो 42 ग्रुप में बटे हुए हैं, उसको 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक तो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उसमें पहाड़ी कोरवा है, बैगा है, अबुझ माड़िया है, कमार है, और पंडो और धनवार और बिरहोर, ऐसे ट्राइब्स हैं जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। और इनके लिए सरकार स्पेशल प्रोजेक्ट चला रही है 1978 से 1978 से। जैसे जसपुर में पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण है, बस्तर में, नारायणपुर में अबुझ माड़िया विकास प्राधिकरण, और गरियाबंद यहाँ का एक ज़िला है जहाँ पर हीरा का बहुत बड़ा माइंस रिजर्वायर है, कह सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है हमारे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में। देवभोग नाम सुना होगा आप लोगों ने। वहाँ पर कमार जनजाति रहती है, और मेकल जो रेंज है वहाँ पर बैगा जनजाति रहती है। इन जो 42 ग्रुप्स है जनजातियों की, उसमें खास बात यह है कि ये जो 5-7 प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं, इनमें एकाकी परिवार है कि जैसे ही बच्चा का शादी होता है तो वो बच्चा अपने माता पिता के घर से अलग होकर के अलग घर बनाता है। और मोस्टली ये जो ट्राइब्स है प्रिमिटिव, ये फॉरेस्ट एरिया में ही रहते हैं, और इनके पास जंगल ही इनके जीवन यापन के साधन है। तो ये विलेजर एरिया में लोग कम रहते हैं, जिसको एक तरह से राजस्व विलेज अपन कह सकते हैं। वो राजस्व विलेज में इनकी संख्या कम पाई जाती है, या तो वन ग्राम में रहते हैं या फिर रिजर्व फॉरेस्ट में या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रहते हैं। और ये जब शादी हो जाती है तो बच्चा क्या करता है कि जंगल को काटता है, अपने लिए घर बनाता है और अपने लिए बाड़ी और खेत का निर्माण करता है। तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं जो इंटरनल माइग्रेशन है उसमें 4 प्रकार के माइग्रेशन होता है, ग्राम से ग्राम, नगर से ग्राम, और इसी तरह से नगर से नगर,
इस तरह का प्रवास होता है। लेकिन एक प्रवास मैंने अपने अध्ययन में पाया कि जंगल में जंगल से प्रवास होता है और या फिर ग्राम से जंगल की ओर प्रवास होता है। इन्हीं बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इस लेक्चर में यह बताना होगा कि यहाँ पर हसदो नदी में एक छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज डैम बना है जिसका नाम है मिनी मातवा बांगो प्रोजेक्ट। शायद सुना होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्शन होता है। तो ये मिनी माता जो है स्वयं प्रवासी थी दार्जिलिंग सर जो स्लाइड दिख रहा है आसाम। सर, शेयर चल रहा है। हाँ हाँ, तो रोक के हाँ हाँ। रखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मिनी माता बहुत यहाँ की सांसद भी रही है और प्रसिद्ध लेडी रही हैं, और वो स्वयं आसाम के चाय बागान में काम किए हैं। उनके माता पिता यहाँ से प्रवास करके चाय बागान में काम करने गए थे। और दूसरा, अभी झारखंड स्टेट है, उसके भूतपूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास, वो भी छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं। उनके मदर फादर प्रवास करके झारखंड गए कोयला खदान में काम करने के लिए। तो इनकी चर्चा, चूंकि प्रवास की चर्चा हो रही है तो करना होगा, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है। तो इन दोनों महापुरुषों ने हमारे प्रदेश का नाम प्रवास करके रोशन किया है, छत्तीसगढ़ राज्य का। तो अब सर आप जैसे नेक्स्ट बताना। बोलेंगे यहाँ नेक्स्ट करेंगे। हाँ हाँ, जी जी, नेक्स्ट करते जाएंगे। प्रवास के डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पर तो ज़्यादा जी चर्चा करने की बात नहीं होगी। सोर्स और डेस्टिनेशन दो विषय होते हैं, काजेस होते हैं, और उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट होता है। हम चर्चा करना चाहेंगे। हाँ, नेक्स्ट करते जाएंगे जी। हाँ, यही छत्तीसगढ़ रोक जनजाति देंगे। क्षेत्र में प्रवास। हाँ हाँ, इसको रोक के रखेंगे। ठीक। अब छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रवास है उसमें ये 5-6 तरह के प्रवास होते हैं। एक तो ग्राम से वन की ओर प्रवास होता है, और ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास होता है, ग्राम से नगर की ओर प्रवास होता है, ग्राम से दूसरे प्रांत की ओर प्रवास होता है, और ग्राम से दूसरे ग्राम और नगर से दूसरे देश की ओर प्रवास। इस तरह के प्रवास की प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में पाया गया है। ठीक है, तो ज्यादातर ग्राम से वन की ओर जो प्रवास मैंने अभी चर्चा में कहा कि 5-7 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, इनके बीच पाया जाता है। और जो ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास और ग्राम से नगर की ओर प्रवास, यहाँ पर माइनिंग और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कारण से हुआ है। और ग्राम से दूसरे देश की ओर जो प्रवास का कारण रहा है छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में, वो रहा है। मिशनरीज के प्रभाव में यहाँ के खास तौर पर जसपुर और जो सरगुजा के 25% जो ट्राइबल पीपुल है वो कन्वर्ट हुए और मिशनरीज धर्म किए, और वो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन में एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, या फिर अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रवास किए। साथ ही देश के अंदर में विभिन्न राज्यों में प्रवास किए। नेक्स्ट स्लाइड। ये छत्तीसगढ़ का जनजातीय क्षेत्र है जिसको 5-6 भागों में बांटा गया है। सरगुजा जनजातीय क्षेत्र, जसपुर जनजातीय क्षेत्र, ये मिशनरीज के प्रभाव में है। और दूसरा, इसके अंदर में माइंस है, कोल माइंस। और फिर तीसरा, जो रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, डैम बनाए गए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और अन्य महासमुंद। और आपके राजनांदगांव ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर बैगा लोग रहते हैं, यहाँ पर कमार लोग रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण जनजातीय क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में काफी ख्याति प्राप्त है साउथ में, वो बस्तर जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर अबूझ माड़िया रहती है। यहाँ पर जो प्रवास है वो उसमें नक्सल प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। सन 2011 की जनगणना में एक बीजापुर नाम का जिला है एकदम साउथ में, दंतेवाड़ा और बीजापुर, वहाँ की जनसंख्या घट गई थी। और उस जनसंख्या घटने का कारण का पता लगाया गया तो वहाँ नक्सली प्रभाव से वहाँ के जो जनजातीय जनसंख्या है दूसरे प्रांतों में और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में प्रवास किए। तो उसको प्रवास में एक तरह से पलायन कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये तो जनजातीय क्षेत्र है।
अब जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रवास हुआ है, जैसे कि मैंने चर्चा किया, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यहाँ की जो गंगरेल बांध है और बांगो परियोजना है, इसमें सैकड़ों की संख्या में गांव डिस्प्लेस हुए और डिस्प्लेस होने के बाद उनको रिहेबिलिटेटेड किया गया। और तीसरा, यहाँ पर कोल और आयरन ओर का माइंस है, उसके कारण से सैकड़ों की संख्या में बस्तियों का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हुआ और उससे फॉरेस्ट और उसका इफेक्ट हुआ। और तीसरा जो कॉजेस है प्रवास का, वो आइसोलेटेड फैमिली होती है, जैसे कि मैंने पूर्व की चर्चा में किया। और पांचवा जो कारण रहा है एम्प्लॉयमेंट। और छठवां एक कारण होता है एक तो कुटीर उद्योग और पशुचारण के कारण यहाँ पर ट्राइबल एरिया में प्रवास होता है। और मिशनरीज और एजुकेशन के लिए प्रवास होता है। अब उसमें ये तो मोस्टली पूरे ट्राइबल एरिया की है। मैंने क्या किया है कि बांगो जो जलाशय है यहाँ छत्तीसगढ़ की, वो 1970 से पूरा होकर के 95 में पूरा हुआ। वहाँ पर लगभग 59 विलेज डिस्प्लेट हुए और उनको 22 गांव में रिहेबिलिटेट किया गया, उनका केस स्टडी किया है। और स्लाइड, ये बांगो जलाशय का एरिया है, रोक के रखेंगे उसको। ये हमारा बांगो जलाशय का इलाका है, जिसको आप देख सकते हैं, ये बांगो का इलाका है ग्रीन कलर में। ये मल्टीपर्पज डैम है और ये बहुत लाभकारी है। इससे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा, खरसियां और बिलासपुर का कुछ हिस्सा लाभ उठाता है कमांड एरिया के रूप में। 2,55,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यहाँ पर सिंचाई होती है। इसके अलावा कोरबा और ये चांपा नगर और जो हमारा एनटीपीसी सीपत है, उसको वाटर सप्लाई होती है। और इरिगेशन के अलावा मछली पालन भी होता है, फोर्स और कल्टीवेशन भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये इसका लाभ और इसके प्रभाव को इस टेबल के माध्यम से दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हुआ 35 ग्रामों में, जो विस्थापित हुए थे 2721 फैमिली, उनमें से 2679 परिवारों को जलाशय के सराउंडिंग एरिया में 20 ग्रामों में रिहेबिलिटेटेड किया गया है, उसको दिखाया गया इस स्लाइड में। और उनके लिए जो नेक्स्ट स्लाइड, जो प्रोग्राम चलाया गया है रिहेबिलिटेशन के लिए, वो इसमें उनको आवास की भूमि प्रदान किया गया, मुआवजा दिया गया और ट्रांसपोर्ट कास्ट दिया गया। ये सब दिखाया। ये रिहेबिलिटेटेड विलेज को इस, हाँ नेक्स्ट स्लाइड। इस मानचित्र मैप के माध्यम से रिहेबिलिटेटेड विलेज को, जो 20-22 विलेज है, उनको दिखाया गया है सराउंडिंग एरिया में, उनके बताया गया। नेक्स्ट स्लाइड। हमने माइग्रेशन को जानने के लिए 10 गांवों का सैंपल स्टडी किया है, उसको इस मैप के माध्यम से दिखाया गया है उस 10 गांव में। फिर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, रोक के रखेंगे। इसमें नाल लेपरा, बांधापारा, रिंगनिया, सरभोंका, केंदई, सतरेंगा, बोड़ा नाला, बगबुड़ा, गढ़ उपरेरा, खोटकुर्री, ये 10 गांव का हमने सैंपल किया है। और यहाँ पर 200, नाल लेपरा में 200 परिवार, और यहाँ 186 फैमिली, रिंगनिया में 48 फैमिली, सरभोका से 165 फैमिली और केंदई से 343 फैमिली और सतरेंगा से 133 फैमिली। इस तरह से इन गांवों में बसाया गया। लेकिन इन गांवों के अलग अलग गांवों से अलग अलग फैमिली के 190 परिवारों को हमने चयनित करके उसका सैंपलिंग किया है। और इन गांवों के, इन फैमिली के अध्ययन के आधार पर पाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। कि वो लोग छोड़
जंगल की ओर चले गए। इस डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, नॉन लेप्रा विलेज से 75% के आसपास जो लोग रिहेबिलिटेटेड विलेज है उसको छोड़ करके फॉरेस्ट लैंड में चले गए और वहाँ जंगल को काटे, अपने लिए आवास भूमि बनाए और खेत बनाए। ठीक है, इसी तरह से मैंने देखा कि जो 10 गांव में रिहेबिलिटेटेड फैमिली है उसमें से 77% जो फैमिली है वो अपने रिहेबिलिटेटेड विलेज को छोड़ करके जंगल चले गए। एक तो रिजर्वायर के कारण जंगल नष्ट हुआ, फिर दूसरा रिहेबिलिटेशन के कारण हुआ, और तीसरा रिहेबिलिटेटेड को छोड़ करके वो खेती के और बाड़ी के और आवास के तलाश में सारी सुविधाओं को सरकार द्वारा प्रदत्त की गई सुविधाएं हैं उनको छोड़ करके जंगल गए और जंगल को फिर दो और इस डैम के कारण से रिहेबिलिट के कारण हुआ पर्यावरण को, फॉरेस्ट लैंड का, ये इसमें दिखाया गया है। ये सर 5 मिनट में कंक्लूड करेंगे सर, रिक्वेस्ट। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, मोस्टली ये दिखाया जा रहा है कि विलेज टू फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक रिहेबिलिटेटेड विलेज के जो फैमिली, ट्राइबल फैमिली, वो प्रवास किए हैं लगभग 77%, और उससे कम विलेज टू विलेज जो माइग्रेट किए वो 10% के आसपास है, और विलेज टू अर्बन एरिया में 5% रिहेबिलिटेटेड फैमिली माइग्रेट किए। ये इस पिक्चर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि जो बसाए गए परिवार थे, रिहेबिलिटेटेड किए गए थे, उसमें से 77.5% जो फैमिली है वो रिहेबिलिटेटेड विलेज को छोड़ करके दूसरे जंगल की ओर और नगर की ओर या अन्य गांवों की ओर प्रवास किए। ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम कंक्लूजन बताना चाहेंगे इसके माध्यम से। नेक्स्ट स्लाइड। और उसका कारण जो 77% फैमिली पुनर्वास ग्राम को छोड़ करके गए, उसका कारण है एक तो रोजगार का पुनर्वास गांव में एम्प्लॉयमेंट का अभाव होना, और दूसरा पुनर्वास गांव में जो फैमिली बसाए गए थे उनके साथ उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पाए उसके कारण से, और तीसरा उनको जो मुआवजा कंपनसेशन दिया गया था उसमें उसके असंतोष के कारण से, ऐसे 5-6 कारणों के कारण से वो लोग जंगल की ओर भाग गए। ये वहाँ की एक्चुअल पोजीशन है। उनके लिए स्कूल बनाया गया था, उनके लिए मुर्गी फार्म बनाया गया था, ये सब खाली बेकार पड़ा हुआ है। और ये जो हैंड पंप है उसमें पॉल्यूटेड वाटर मिला, 22 लोग वो कि एक ही दिन में डेथ हो गई थी, इसको बंद किया गया, फिर फिल्टर लगाया गया। तो ये वहाँ की जो रिहेबिलिटेड विलेज है वहाँ की प्रॉब्लम्स है। तो इस आधार पर हमने पाया कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनका कहना था कि अगर गांव से नगर की ओर की प्रवास को रोकना है तो जो नगर की सुविधाएं हैं उनको गांव में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो प्रवास में कमी आएगी। मैं इस मत से अब्दुल कलाम साहब के सहमत हूँ, लेकिन मैंने रिहेबिलिटेटेड विलेज में देखा एजुकेशन फैसिलिटी थी, हेल्थ फैसिलिटी थी, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी थी और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी। उन सारी सुविधाओं को छोड़ करके वहाँ के 77 फैमिली जंगल की ओर चले गए, जहाँ पर ना तो पानी की सुविधा थी, ना जहाँ सड़क की सुविधा थी, ऐसा ना बिजली की सुविधा थी। ऐसा क्यों हुआ? तो उसका मूल कारण मैंने अपने स्टेट उनको एक तो भोजन की तलाश में और दूसरा आदत के कारण से वो लोग जंगल, आदत उनकी परंपरागत ट्रेडिशनल हैबिट रही है कि उनको एग्रीकल्चर करने की और फॉरेस्ट गैदरिंग करने की, जंगल में हंटिंग करने की, और वो सुविधाएं जो रिहेबिलिटेटेड विलेज है उसमें उनको नहीं मिल पाया। इस कारण से वो लोग 77% फैमिली जो है इस बांगो जलाशय के रिहेबिलिटेटेड परिवार के जंगल की ओर प्रवास कर गए।
थैंक यू सर, आपने एक मिनट, इतना अच्छा नेक्स्ट मैं इलाबोरेटली। यही करना चाहूंगा हाँ कि अब क्या हुआ कि मैं अंत में 2 लाइन कहना चाहूंगा कि बांगो जलाशय से आज छत्तीसगढ़ के 2,55,000 हेक्टेयर भूमि में डबल क्रॉप हो रहा है। बिजली का 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हो रहा है और 3-4 नगरों को यहाँ वाटर सप्लाई हो रहा है। मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके कारण से जो 59 विलेज के जो ट्राइबल पीपुल डिस्प्लेस हुए, उनमें से अधिकांश जो पीपुल है वो जंगल की ओर चले गए और उनकी हालत बहुत ही खराब, डेथ रेट काफ़ी अधिक है। एजुकेशनली उनका गरीब है और कुपोषित है और साथ ही ऋणग्रस्त है। और मैं तो अंत में एक यही कहूँगा कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। थैंक यू। और मैं वेरी इन्हीं वेरी शब्दों के नाइस साथ सर। मैं थैंक यू सर, नरेंद्र जी आपने को धन्यवाद देना आपने चाहूँगा और आप सबने सुना मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया सर एक्सप्लेन किए और एकदम ग्राउंड लेवल पर जो काम किए वो सबको देखने को मिला। सर थैंक यू सर, आपने समय छोड़ के हमारे और आज के इस सेमिनार के स्पेशल लेक्चर में आज हरप्रीत सिंह सर का माइग्रेशन इन इंडिया, सम रिफ्लेक्शन ऑफ माइग्रेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन। इसके बाद प्रोफेसर रामकृष्ण माइती वेरी नाइसली एक्सप्लेन स्पेशल डायमेंशन of pandemic, and also at present now Dr. P L Chandrakar sir, one of leading professor and one of very active academician from Bilaspur CMD College, and also my respected Guruji and namaskar sir, thank you। और नमस्कार, थैंक यू। ओके सर, ओके सर। मैं ओके, इसके नमस्कार। बाद प्रोफेसर वाई जी जोशी सर के थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं जोशी सर को जोड़ मतलब इन बात में कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं सीधा सभी इस स्पेशल लेक्चर में सभी रेस्पेक्टेड सर को पुनः चैतन्य कॉलेज परिवार पामगढ़ छत्तीसगढ़ की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं कि आप हमेशा निरंतर जुड़े रहेंगे और आपके मार्गदर्शन मिलते रहेंगे। हम सीधा टेक्निकल सेशन 5 के लिए ऋषभ सर पांडे, ऋषभ देव पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर चैतन्य कॉलेज पामगढ़। आर यू प्रेजेंट सर, ऋषभ सर? Yes, sir. I am present here, sir. I would like to invite Professor Pandey from Chaitanya College Pamgarh. Must you will start technical session 5, and thank you to all in this special lecture session. Over to you, Thank you. Rishabh Dev Pandey sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Hello to all. This is Rishabh Dev Pandey. We are going to start technical session 5. The theme of this session is impact of rural-urban migration. In this session, we have as a chairperson Professor Rameshwar Prasad Singh from ABSM Lalganj, Vaishali, Bihar, and we also have as a co-person Dr.Harpreet Singh from BHU Varanasi, Uttar Pradesh, and we have a long list of participants. Now I am going to call, if all participants are there here, they will confirm their presence. In first number, Dr. Sweta Rani. Dr. Sweta Rani ma'am. Dr. Akhilendra Nath Tiwari sir. सर पांडे प्लीज, हम सिक्योरिटी को खोल रहे हैं, एक्चुअली माइक ऑन नहीं कर पाएंगे, प्लीज आपने जारी रखिए। रामेश्वर प्रसाद सिंह सर को इनवाइट कीजिए और मैंने वो लॉगिंग को खोल रहे हैं ऑडियो के लिए। ओके सर। आप सिंह सर को इनवाइट कीजिए, कंटिन्यू रखिए। हाँ, अभी माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स, प्लीज अपना माइक्रोफोन जिसका नाम लिया जा रहा है। जी जी। रिस्पेक्टेड प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद सिंह सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे 2 दिवसीय सेमिनार में। प्लीज आप अपना माइक ऑन करके हमें संबोधित करने का कष्ट करेंगे। आपकी अनुमति से फिर ये सत्र आगे बढ़ाया जाएगा। सर प्लीज
माइक सर, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। हाँ, डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह सर, अपना अपना ऑडियो नहीं आ रहा है सर। सिंह सर, आपका साउंड नहीं आ रहा है। जी सर, नमस्कार। हाँ नहीं, हरप्रीत सिंह सर नमस्कार का आ सर। रहे हैं, रामेश्वर प्रसाद सिंह सर है, क्योंकि हमारे दो चेयर। सर अनम्यूट कीजिए। रामेश्वर प्रसाद सिंह सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, प्लीज। हाँ आ रहे कंटिन्यू जी। सर। हाँ सर, एक दफे और माइक को आप अनम्यूट करेंगे जी। ये म्यूट अनम्यूट फिर से। प्लीज अटेंशन, प्लीज अपना माइक को ऑन कर लेंगे जैसे आपका नाम लिया जाएगा। हमारे टेक्निकल सेशन स्टार्ट हो जा रहे हैं। इसके बाद हाई वोल्टेज पैनल डिस्कशन है, और जिस पैनल डिस्कशन में आज के प्रोफेसर हाँ आशीष सरकार सर, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, रतन मजुमदार, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट जियोग्राफी, ओके JNR महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर वो अंडमान, डॉक्टर परस राय, प्रोफेसर SK चतुर्वेदी नागालैंड यूनिवर्सिटी, डॉक्टर चंद्रमौली सर, ऑल्सो विजय कुमार तिवारी सर, CMT कॉलेज। वेरी हाई वोल्टेज टॉक होने वाला है इसके बाद पैनल डिस्कशन में। चलिए पांडे सर, ओवर टू यू जी। सर। आदरणीय सर, प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद सिंह सर हमसे जुड़ चुके हैं फिर से। माइक भी शायद सर का ऑन हो चुका है, अब आवाज उनकी हमारे तक पहुंच रही है। कुछ ही क्षणों में हमें संबोधित करेंगे सर। प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद सर, आपका साउंड नहीं आ रहा है। ओके, हरप्रीत सिंह सर कंटिन्यू कीजिए। जी जी सर। सर। जी सर। प्रोफेसर प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद सर, मैं शुरू करवाऊं अगर आप आज्ञा दें तो। सर चालू कर दीजिए सर, ओके। प्लीज सर का। जी सर। Very good afternoon to, sorry, very good morning to all of you, those who are present there in online mode as well as in offline mode there itself, there in the college. So on the behalf of Professor Rameshwar Prasad Singh, Hello. to start जी this. सर। जी Yes, सर। yes sir. Hello. Sir, audible sir. आप शुरू कीजिए। Sorry. Hello, sir. Hello. Sir, जी सर, हम सुन पा रहे हैं सर आपको। जी जी। audible है जी sir. जी जी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑल माननीय कुलपति महोदय जी, जो उसको कहते हैं, उसके बाद वीरेंद्र तिवारी सर, जो हमारे चेयरमैन हैं आपके चैतन्य महाविद्यालय के, गरिमा तिवारी मैडम, प्राचार्य अशोक प्राचार्य महोदय गुप्ता जी, अशोक कुमार प्राचार्य, अशोक कुमार सिंह यादव जी, इस सारे लोगों को नेशनल सेमिनार ऑन इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट is the best Chhattisgarh state, best in all respect. The today's seminar sponsored by Chhattisgarh Council, Chhattisgarh Council of Science and Technology, organized by Chhattisgarh College. आप सभी लोगों को इस मौके पर जो हमारे प्रेजेंटर हैं, पार्टिसिपेंट, हम अभिनंदन करते हैं। अब हमें रिक्वेस्ट करेंगे जी। हेलो हरप्रीत जी, न हो तो आप पेपर को पढ़वाएं कि हम एड करें। हरप्रीत जी, आप जैसा हुक्म करें, जैसा आपका आदेश हो सर। जी आप न हो तो पेपर को पढ़वा लें। ठीक है सर। बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, हम जुड़ नहीं पा रहे थे, फिर बुलाया गया, तो आपको पेपर को एक 1 by 1 रश्मि रानी जी हैं, दयाल सिंह कॉलेज से आप काम कराएं। जी ओके सर। मैं on the behalf of Rameshwar Prasad sir, I welcome all the participants, those who are there. I think there are 11 participants are there. I'll call one by one. If they are available, kindly show your presentation and give your views. So regarding the timings, I will request that already we are having short of time.
So to kindly be concentrated on the contents which is there, methodology, and the findings and conclusion. So first of all, I'll request Dr. Shweta Rani. She's from Dayal Singh College, University of Delhi, New Delhi. Her topic of paper is urbanization, migration trends, and socio-economic sustainability in Delhi metropolitan region. If you are there, Dr. Shweta Rani ji, I'll request to kindly start your presentation. Yes sir, a very good morning sir. I am available here, but मैं अपना screen share नहीं कर पा रही हूँ. ये enabled नहीं है sharing वाला. Please request. Okay, I will request Chaitanya College coordinator kindly please allow them if the. आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लॉक नहीं है, खुला है मैडम. आप ऑप्शन में जाइए. ऑप्शन में मैं देख रही हूँ वो जो हाईलाइट किया हुआ है ना एरो, वो डिसेबल्ड है. डिसेबल्ड है. You are not allowed to share your screen आ रहा है सर. शेयर योर स्क्रीन अलाउ नहीं है, लॉक तो खुला है. अलाउ है सर मैडम. मैम ये अलाउ है आप हाँ अभी अलाउ हो गया. थैंक यू सो मच सर. मैं बस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जी. सर मेरी स्क्रीन विजिबल है. हाँ मैम हो रही है. चल रहा है. कंटिन्यू. ओके. My name is Shweta Rani and I'm working as assistant professor, Department of Geography, Dayal Singh College, University of Delhi. और आज मेरे presentation का topic है urbanization, migration trends and socio-economic sustainability, जो मैंने दिल्ली metropolitan region के संदर्भ में लिया है. तो मैं क्विकली, टाइम का थोड़ा क्रंच है तो मैं जल्दी स्लाइड्स को मूव करूंगी. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, इन 3 एस्पेक्ट को लेकर के मैंने आज का मैडम मैक्सिमम टाइम लिमिट 7 मिनट मैडम. ओके सर, जब 6 मिनट हो जाए एक बार रिक्वेस्ट है सिर्फ बता देंगे आप. मैं ओके कंटिन्यू मैम. थैंक यू सो मच सर. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और ट्रांसपोर्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट सिविक एमिनिटीज है जिसको मैंने लेकर के दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन के कंटेक्स्ट में आज का प्रेजेंटेशन डिसाइड किया है. And all these 3 are very important and crucial for achieving the goal of good health and well-being, जो sustainable development goal number 3 का part है. And also it ensures socio-economic sustainability of migrant population, especially in the urban areas. So this is the concept of mega city. I'll just skip it. सिर्फ ये बताऊंगी, mega cities are those cities that have a population of 10 million and above. और वर्ल्ड में ऑलमोस्ट आउट ऑफ 29 मेगा सिटीज में इंडिया के 4 मेगा सिटीज आते हैं, विच इज दिल्ली एनसीटी, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. अर्बनाइजेशन, वी ऑल नो अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फेनोमेनन, और ये प्रेडिक्ट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस कि बाय 2050 ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वुड बी लिविंग इन अर्बन एरियाज. नाउ इस अर्बनाइजेशन के कारण व्हाट हैपेंस, कपल्ड विद फ्रेश माइग्रेशन वेव्स रिसीव्ड, इट नेगेटिवली इंपैक्ट्स बोथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट. एंड हेंस जो मेगा सिटीज है वो सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. हम सबको पता है दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, सो इट इज actually facing this problem. This is the trend of migration that I have shown through a line graph 1901 से 2011 तक, and this is for India. Cities definitely they are the engines of economic growth. और लोग cities की तरफ क्यों migrate करते हैं? In the lure of better employment opportunities, high paying jobs, high and well acclaimed educational system, security factor and decent and better standard of living with quality of life and well-being. और मैं इस context में ये भी बताना चाहूंगी, I basically belong from the state of Bihar, Patna, but I have migrated to Delhi for higher education, and after getting a job here, I have actually settled. So this is a case of migration that actually happens. Delhi as a mega city, it is the prime mover and nerve center of ideas. लोग दिल्ली की तरफ क्यों आते हैं? Because it is the seat of mesmerizing Indian culture, the Tughlaq dynasty and all those, the seat of national governance and a center of business. It is a growing hub of contemporary and higher educational system, and it is a center of employment generation. It is also the capital of the largest democracy in the world, which is India, and hence Delhi, no doubt, it receives constant and rapid influx of migrants. Delhi as a mega city, yes, I'll move ahead. Now, the rapid pace of urbanization in Delhi, किस तरीके से ये justify हो रहा है? By the fact that 97.5% of Delhi's population lives in urban areas, and remaining 2.5% live in rural areas. Or over the years, even the number of villages in rural areas have decreased considerably, and human migration is one of the important factor whereby people move from one place to another, particularly different countries, regions, and especially Delhi में जो migrants जो आ रहे हैं mostly that are from the densely populated areas of eastern UP, Bihar, and mostly from Punjab in search of jobs.
सिग्निफिकेंस माइग्रेशन क्यों जरूरी होता है? बिकॉज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ द सोसाइटी बेटर, especially in context of their socio-economic sustainability. So it just shows that kitne variety of log hai who are coming to Delhi, moved with family, this much lakh, employment ke liye 19.8, marriage purpose, education, and this is the other factors. These are the different mega cities of the world. और इसमें Delhi का scenario आप देखिए 2030 में it would be having the maximum urban population as per United Nations. India के context में Delhi lies at number 2 after Greater Mumbai. This is the trend of urbanization in Delhi from 1901 up till 2011 shown through a line graph. These are showing the expansion of built-up areas. लोग जो शहर में रह रहे हैं तो शहरीकरण कितना ज्यादा हो रहा है या फिर built-up area कितना rapidly increase कर रहा है, ये red mark से indicate है। और 2024 में देखिए see the proportion that is going. तो इन सब का result क्या होगा? It will have a negative impact on the urban infrastructure. Population growth, out of the total urbanization, increase in migration contributes almost 23%, and it is a major factor. This is showing for different years the annual increase in migrant population in Delhi. This is a proportionate diagram. Now, nature of problem क्या होता है? जो लोग दिल्ली में migrate करके आ रहे हैं, these are not productively absorbed in the city life, और ये एक pressure create कर रहे हैं civic amenities के ऊपर. Poor sections worst hit होते हैं. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इन लोगों को नहीं मिल पाता है और इसके कारण इनकी सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी सर्वाइव नहीं हो पाती। ऑब्जेक्टिव बेसिकली ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन शो करना है, सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा इनोवेटिव सजेशंस हमें सजेस्ट करना है बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर एंटिटीज. These are the important civic amenities: poor housing condition, water and electricity problem, poor sanitation, bad roads and transportation problems. और ये हम actually face कर रहे हैं. Okay, I'll just skip away. Urban water resource, पता है water is one of the prime resource, और adequate and reliable source of water is very important. And mega cities में ये एक problem होता है. Delhi में due to increasing urbanization and migration, this problem is very, very, very huge. These are the problems of water that we face in Delhi, and this is the management techniques that I'm going to suggest. Recycling based water को करिए, water harvesting technique करिए, artificial recharge, छत के ऊपर आप ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे जो बारिश का पानी होता है वो एक पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड जाके सेव हो जाए. अपने वाटर फुटप्रिंट को असेस करिए. सेकंड, सैनिटेशन प्रॉब्लम, that is also one of the biggest, especially slum areas में overcrowding and low quality of toilet facilities, proper disposal system की बहुत problem होती है. Health hazard pose होता है और इसका suggestion क्या है? We can have diversion and encouragement of use of small decentralized sewerage system, provision of safe elimination. And you see the thirst, transportation problem. Transportation बहुत बड़ा congestion system है दिल्ली में. These are the methods to improve good governance in the form of privatization and deregulation of public transport. We can have introduction of new technologies like cable cars, जो already Brazil में institute हो चुका है. Rapid transit system, like Delhi में already metro has been there, और इसके कारण problem of congestion is being taken care of. We can also have the system, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था 2016 में odd even system, and that proved to be very, very good. Pollution level को भी down किया था. Now, जिसको मैं actually advocate करना चाहूँगी आज के सेमिनार में, and it is indicating the best practices in green innovation are a reflection of sustainability in Delhi. ऐसा हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं जिससे जो increasing हेलो, दूसरे लोग माइक को बंद कर ले, दूसरे लोग माइक को बंद कर ले, आवाज आ रही है. ओके सर, कंटिन्यू. मैडम कंटिन्यू प्लीज. Ma'am, are you there? Shweta ma'am, Dr. Shweta, please continue. आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मैडम. सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है. आ रही है. ओके. सर स्लाइड भी दिख रहा है? हाँ बिल्कुल मैम. Yes, जी सर. नाउ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे प्रेजेंटेशन का पोर्शन है कि दिल्ली में हम कुछ ऐसा बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिसको ग्रीन इनोवेशन का नाम दिया जा रहा है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन दिल्ली.
इसमें एक तो है पेपरलेस कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन एंड ऑनलाइन रेमिटेंस, जिसको टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के नाम से जान रहे। यूज ऑफ ग्रीन साइकिल्स एट मेट्रो स्टेशन, और आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर स्टूडेंट्स को ग्रीन बनाने के लिए रादर देन यूजिंग देयर ओन व्हीकल्स एंड कार्स, वी प्रोवाइड देम ग्रीन साइकिल्स। उनका आई कार्ड हम लेके अपने पास रखते हैं और उनको कैंपस में फ्री राइड देते हैं। Third, low floor CNG buses in Delhi to enable the differently abled citizens keep moving, उनको रुकना नहीं है। Next, Delhi Metro backs the title of world's first green metro for its eco-friendly initiatives, which is solar power installations, उसके छत के ऊपर रहता है, initiative for green depots, stations and buildings. The next point that I would like to advocate is the provision of green building. Now, what is green building? It aims at using natural building materials. Concrete नहीं use करना. Concrete में हमारा carbon emission बहुत ज़्यादा high होता है. So we can have some ascrete होता है, या फिर there is a terminology which is known as greencrete, जिसमें लो कार्बन एमिशन आता है। एंड इट अडॉप्ट ग्रीनर मेथड सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर इट्स वाटर नीड्स, सोलर एनर्जी के बेसिस पे चलता है, इसमें एनर्जी जितने भी कंजम्पशन होते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जो पानी वेस्ट होता है उनको हम एज इट इज नहीं जाने देते, देयर इज अ सिस्टम ऑफ रीयूजिंग इट थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट्स, हेंस मेकिंग बिल्डिंग सेल्फ सफिशिएंट, एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी विद लोअर कार्बन फुटप्रिंट। एग्जांपल सिविक सेंटर जो अभी है दिल्ली में, आसिफ अली रोड में है, विद एन एरिया ऑफ ऑलमोस्ट यू कैन इमेजिन 1.16 लाख स्क्वायर मीटर्स। डेवलपमेंट ऑफ वर्टिकल गार्डन्स, ये एक दिल्ली मेट्रो का एलिवेटेड पोर्शन है जो मैंने एक्चुअली न्यूज़पेपर क्लिपिंग के थ्रू लिया है, एंड यू कैन सी दीज आर द वर्टिकल पिलर्स जिस पे ये मेट्रो चल रही है, और इसको हमने एज इट इज वेस्ट नहीं किया, इस पे हमने वर्टिकल गार्डनिंग यूज किया है। सो 8 pillars of elevated blue line from Dwarka up till Noida city center between Mandi House and Pragati Maidan stations are supporting vertical gardens and initiative by NDMC. And इसका main aim क्या है? To increase the green space in Delhi. Second, anti-pollution plants to reduce smog and to produce oxygen. जितने भी vehicular emissions से जो gases निकलते हैं ना, ये plants उनसे फर्क उनको नहीं पड़ता है। they are anti-pollution plants. ये smog को reduce करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा oxygen produce करते हैं. Wider use of green tanks. Most of the houses in Delhi, they are actually not installing the black or the white. They are installing these green tanks पानी भरने के लिए. It proves to be most economical and environmentally sustainable storage. It is modular in design. It is relocatable, reusable, and can be built to store capacities of almost 50 megaliters of water. This is सबने ad देखा होगा, right choice of the bins. We all should be aware enough, sensitizing people for segregation of waste using different colored bins at public places. ये चारों तो हमें ज़्यादातर नहीं मिलते, but mostly this blue and green bins are found at each and every place. अगर आपके पास गीला कचरा है तो green में डालिए, सूखा है तो you can put it in the blue bins. Now, role of media बहुत जरूरी है, मीडिया और लोगों के अंदर मास अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि हम कैसे इस चीज को अचीव कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। सो पीपल आर, वी नो ऑल द पीपल टुडे हैव बिकम टेक सेवी, दे आर कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया, और स्पेशली लॉकडाउन के फेज में तो बहुत ज्यादा इसका रोल आया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स विद एंडलेस बाउंड्रीज इन नॉलेज शेयरिंग। सो मीडिया सेंसिटाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग मास अवेयरनेस, and it calls for behavioral change that needs to be more insensitivized. There was a very famous slogan, हाथ मुंह और बम बीमारी होगी कम, and it actually fascinated me. हाथ, washing hands with soaps, मुंह, drinking purified water, and bum, using clean toilets. So all these 3 important aspects जो सबसे ज्यादा एक माइग्रेंट पॉपुलेशन को नहीं मिल पाता है एक मेट्रोपॉलिटन शहर में, उसको हम कैसे प्रोवाइड करें। So it was an initiative by Hindustan Unilever. So in my concluding remarks, I would like to advocate 4 things. Urbanization and migration should be viewed as an opportunity. उनको एक टेंशन या एक प्रॉब्लम की तरह नहीं रियलाइज करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए. It should be viewed as an opportunity, and urban centers should be viewed as growth engines. Second, this would contribute to revitalization of the urbanizing India. Third, emphasis should be there on urban infrastructure and civic amenities like clean water, sanitation, and greener transport. And fourth, we must spread awareness about the best practices in green innovation, leading to sustainable economic development of megacities and contributing to make Delhi metropolitan region as a world-class sustainable city to live, to grow, to thrive, and to prosper. So in my final summation, all that is required is a self-motivated effort, a positive attitude, and a willingness to walk that extra mile needed to achieve that excellence. So with this, thank you so much. Thank you all.
Sir, one very important information. Dr. Rameshwar Prasad Singh sir, please, sorry to say you at present now, Professor Y.J. Joshi sir, unfortunately उन्होंने जुड़ नहीं पाया था, हमारे साथ फोन कॉल में है सर. प्लीज हम इनवाइट करना चाह रहे हैं, बीच में थोड़ा सा मैंने जोशी सर सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ, उनसे उनको बुलवा दीजिए. सर प्रसाद सिंह सर, जी हाँ, बुलवा दीजिए. इमेरिटस प्रोफेसर सर हैं वाईजे जोशी, जिसका नाम पूरे से भारतवर्ष नहीं सारी जी हाँ, जानते हैं सर, उनको बुलवाइए. सुन पा रहे हैं आप? नाइस टू मीट यू, बुलवाइए उन्हें. जोशी सर का आवाज जा रहे हैं सर? मैं इनवाइट करना चाहता हूं प्रोफेसर वाईजे जोशी सर, जो कि उज्जैन रिसर्च सेंटर, प्रोफेसर इमेरिटस एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च उज्जैन, सर के स्पेशल लेक्चर था. मैंने सर कनेक्शन होगी ड्यू टू इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण, आपको सबको जोशी सर के स्पीच बाई फोन में आपको ऑडियो सुनाएंगे. सर प्लीज आप हमारे इस सेमिनार के एक कंक्लूजन देंगे विद इन 5 मिनट्स में, क्योंकि आप नहीं पता है, समय बहुत कम है. आप 5 मिनट में हमको 80% हमारे जो कॉन्सेप्ट है और हम कैसे एक सॉल्यूशन के पास आगे जा सकते हैं, और ये माइग्रेशन और जो आपका शुरुआत जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपने एकदम यंग एज में आपने जो शुरुआत की थी, आज भी सारी स्कॉलर स्टूडेंट्स उसी को फॉलो करते हैं. तो सर सीधा हम सुनेंगे आपसे. I would like to invite Professor Y.J. Joshi, Professor Emeritus, MP Institute of Social Science Research, Ujjain sir. Over to you, sir. Thank you. आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र नाथ. अगर कोविड का भय नहीं होता तो मैं आपके सेमिनार में जरूर आता. फिर भी आपने मुझे इतना समय दिया, तो भी मैं बाहर ही हूँ, तो इसके लिए आपको धन्यवाद. उसके मजदूरों के प्रवास पे मैंने बरसों काम किया है, और बहुत साल पहले मेरे साथ आपके ज्योग्राफी के बहुत सारे प्रोफेसर जो आज बहुत सीनियर प्रोफेसर हो गए हैं, उन्होंने इस पलायन के मुद्दे पे ऊपर काफी सारी बातचीत करते रहे हैं. और वहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है जो है पब्लिक भी हुआ है 2004 में छत्तीसगढ़ के पलायन के ऊपर, जो मैं आपको शॉर्ट में 5 मिनट में बात आपको एक तो बधाई देना चाहूंगा. और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये पलायन शब्द जो है ये अपने आप में बहुत खराब शब्द है. मैंने जो माइग्रेशन अभी हो रहा है उसको हम पलायन नहीं कर सकते. पलायन तो जो है वो पहले तो होता था, लेकिन जब अभी कोविड के समय में जो हुआ था वो पलायन है. ये तो लोग रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, और इसको पलायन कहना उचित नहीं होगा. अब पलायन के कारण बहुत सारे बदलाव आ गए हैं. मैंने तो 1984 से लगाकर पिछले 2 साल तक भी पलायन के ऊपर काफी काम किया है. और अब ये जो है ना, इसमें 4 मुख्य बदलाव हो गए हैं. अब मजबूरी की जगह लोग गरीबी के आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में इसको लेना चाहिए. अब पलायन जो है सेलेक्टिव हो गया है. पहले पूरा परिवार का परिवार चला जाता था, अब ऐसा नहीं रह गया है. केवल वही लोग जा पा रहे हैं जो काम करने योग्य हैं, और ऑर्गेनाइज अच्छा हो गया है. और मोबाइल के कारण एक बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ है कि ठेकेदारों की जो पकड़ थी वो उनका शिकंजा जो है वो अब कमजोर हो गया है. और प्रवासी लोग जो है ना पहले से जो जहाँ पर जा रहे हैं वहां पर वो अपना संपर्क कर पा रहे हैं. और प्रवास करने वाले लोगों के आय में एक बहुत बड़ा भाग जो है वो बाहर आई हुई बाहर प्राप्त आय के कारण हो रहा है. इसलिए इसको हम आपको आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में देना चाहेंगे. और इसके कारण उनके जीवन स्तर में भी बदलाव हुआ है. नीतिगत स्तर पर हमको 2 बातें ध्यान में रखना पड़ेंगी. पहले वे लोग जो मजबूरी में जाना हेतु पड़ रहा है, उन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मैंने जहाँ वे हैं वहीं पर की जाना बहुत जरूरी है. जिसमें चाहे मनरेगा के द्वारा किया जाए या रोजगार गारंटी योजना के रूप में किया जाए, परंतु वे लोग जो कि अतिरिक्त कमाई के लिए बाहर जा रहे हैं उनके लिए अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए.
रोकना, शब्द पलायन रोकना, ये कोई हल्की चीज नहीं है। मुझे मालूम है कि जब छत्तीसगढ़ जब बन रहा ही था तब इसको एक अवसर के रूप में लिया गया था और गवर्नमेंट ने एक मूर्खता की थी कि पलायन रोक लो, और रोकने के लिए पुलिस वाले लग गए थे जो लोगों से पैसे लेते तो उनको रेल में बैठने देते थे और लोग बहुत परेशान होते थे। इसलिए पलायन को नेगेटिव न लेते हुए उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। जो कमाई के लिए जा रहे हैं उनको ये गारंटी होनी चाहिए कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ उन्हें राशन मिल सके, दवाई मिल सके, उनको, क्योंकि अगर 7 छोटे बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन की व्यवस्था हो सके। और इसके लिए एक बहुत अच्छा होगा कि कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाए। कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर मतलब जो लोग, जिनके लोगों मजदूरों की जरूरत है उनको वो उसके ऊपर रजिस्टर करें, गवर्नमेंट गारंटी, बैंक गारंटी उसके साथ हो, कितने दिन के लिए उनके लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, किस प्रकार के कार्यों के लिए लोग चाहिए, ये सब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लोग रजिस्टर करें। और प्रत्येक गांव पंचायत में या कम से कम ब्लॉक स्तर के ऊपर ऐसी समितियां बना दी जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बच्चों की 5-5, 6 लड़कों की ऐसी सोसाइटी बना दी जाए जो कि जो लोग जाना चाहते हैं उनको उसी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो जाए और रजिस्टर होने के बाद उनको गारंटी मिल सकेगी जितने दिन का काम है जिसको वो वहां से करके और वो अच्छे पनिशमेंट प्राप्त करके और घर आए, और घर आने से पहले उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, मेडिकल जांच हो सके, जिससे ये देखा जा सके कि कोई संक्रामक बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। इसलिए अब ये जो इसको पलायन शब्द को हटा देना चाहिए, इसका उपयोग मीडिया वाले करते हैं और इसको एक गरीबी हटाने के एक प्रयास के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। और हमारा जो दृष्टिकोण जो पलायन के प्रति था, जिनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता है, क्योंकि हम लोगों ने तो सर्वे भी किए हैं, जो अत्याचार की घटनाएं आती है वो बहुत कम होती है और उसमें जो बहुत से केस वो होते हैं कि जिन्होंने पहले से एडवांस ले लिया है और वो काम करना नहीं चाहते, काम पर से बाहर जाना चाहते हैं। और इसलिए ये जो इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट है वो अब बिल्कुल मैंने अब उसका कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। उस इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट को पूरी तरीके से बदलना चाहिए एंड इट शुड बी मेड फ्रेंडली टू द लेबरर्स हु आर माइग्रेंट। वो माइग्रेंट अपना अधिकार है उनका, किसी भी भारतवर्ष में किसी भी आदमी को कहीं जाता है तो उसका रोग का जो रोग है वो सहयोगात्मक होना चाहिए। और ज्यादा गवर्नमेंट को मालूम है कि इन दिनों में इतने लोग माइग्रेट करते हैं, अगर इसका डेटा उनके पास है तो उनके माइग्रेशन को सुलभ बनाने के लिए स्पेशल गाड़ियां, ट्रेन, स्पेशल बसेज या ऐसी सुविधाएं उपस्थित करना चाहिए जिससे कि वे सुगमता से जा सके और वहां जाके अच्छे स्थिति में और अच्छी मजदूरी पर काम करें और घर आकर वो जो पैसा है उसका उपयोग अपना जीवन स्तर सुधारने में कर सके। ये आपने मुझे याद किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उन लोगों को फिर से धन्यवाद जिन्होंने मेरे साथ टीम वर्क के रूप में रायपुर और बिलासपुर में मेरे साथ काम किया था। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने अपने जो भी टेक्निकली प्रॉब्लम था मैंने आपको पीछा नहीं छोड़ा था सर, लगातार मैंने बोले कि सर का किसी भी हालत में सर से सुनना है, क्योंकि जिन्होंने इस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारतवर्ष में माइग्रेशन का एक नया रूप, नया शोध जिन्होंने दिया है और काफी रिसर्च स्कॉलर ने या वेबसाइट में सर्च करते हैं, कई सारा लिटरेचर मिलता है, लेकिन प्रोफेसर वाईजे जोशी सर ऐसा इमेरिटस प्रोफेसर है जो कि आप जानते हैं इमेरिटस प्रोफेसर, और जिन्होंने माइग्रेशन के एकदम कोर कॉन्सेप्ट ब्लॉक डेवलपमेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइग्रेशन and very important relevant topic. There are the micro planning, it is very important, and also there are rural development and basic amenities. हम कहीं ना कहीं बेसिक एम्यूनिटीज को हम दे नहीं पा रहे हैं रूरल क्षेत्र में, जो कि रूरल पीपल दे आर माइग्रेट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। प्रोफेसर जोशी सर नमस्कार, वंस अगेन थैंक यू सर। आपसे मैंने डायरेक्ट फोन से कांटेक्ट करके इस सेमिनार में अपना स्पीच हम सभी को सुना पाए। थैंक यू सर, आपने अपना समय छोड़ के हमारे बीच रहे। सारी चैतन्य कॉलेज पामगढ़ के सारी प्राध्यापक की तरफ से और सारी महाविद्यालय की तरफ से आपको आभार प्रकट करते हैं सर। थैंक यू सर। अगर जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो मैं अपने अच्छे से आपके पास जाऊंगा। जी सर, जी सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद सिंह सर, कंटिन्यू सर।
हेलो, प्रोफेसर जोशी साहब को भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत इंफॉर्मेटिव उनका माइग्रेशन के ऊपर आया। मैं उनको भी हृदय से प्रणाम करते हैं, बधाई देते हैं। हरप्रीत जी आगे बढ़ाएं, पेपर देखिए नीचे आगे बढ़ा दीजिए। जी सर। Ma'am Shweta, Dr. Shweta Rani has given a very good informative presentation on the topic urbanization and how it can be done with the green innovations. Now I'll call upon the next paper presenter, Dr. Akhilendra Nath Tiwari ji. Are you present, sir? Yes. Sir, I will request you to deliver your presentation on the topic urbanization of Mirzapur city, Uttar Pradesh. Sir is from Please SVP College. allow me to share my screen. Ji, sir. So I'll request the team of Chaitanya College. कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। No, I am not allowed to share the screen. It is showing. शेयर द स्क्रीन कुछ प्रॉब्लम। Yes, sir, we are allowing. By the time you Yes, allow yes, me, sir. yes, now I And can. now you can show your Yes. screen, sir. Yes. ये कुछ सिक्योरिटी इसमें ठीक करो। सिक्योरिटी पोस्ट मैनेजमेंट है, इसको बंद करो ना। सिक्योरिटी को अलाउ करो। हाँ, सबका अलाउ है। हाँ ठीक है सर, अभी देखिए तो सर। No, it is not going. हाँ, Yes, प्रेजेंटेशन now. दिख रहा है। ओके ओके ओके, कंटिन्यू। Is this visible now? Hello. Sir, kindly share your screen. I am sharing it. PPT is not visible, sir. That is what I am showing. Wait. Kindly do it once again. Okay. Can you see now? No, sir. नो Can you see नो now? नो, अखिलेंद्र तिवारी जी नहीं आ रहा है। हो रहा है सर, हो No, रहा no, है। no. Now we can able. Yes. अब जी जी, देख पा रहे हैं सर हम। देख रहे हैं? यस सर, विजिबल है। अब शुरू जी कीजिए सर। सर। Okay, okay. So thank you very much, the organizers, Chaitanya College, and my dear Professor Rameshwar sir on the chair, on co-chair Dr. Harpreet Singh sir, moderator Rishabh Dev Pandey ji, rapporteur Ms. Satrupa ji. Although this is a very limited time slot given to me, but the work is vast, so I'm trying to present in 5 to 10 minutes. So the topic of my presentation is urbanization of Mirzapur city. I will skip through introductory portion, except talking about some important points like what is urbanization. We know that it is defined as the relative concentration of population in urban areas, that is towns and cities of a given territory. That means in the countries like India, basically urbanization is like we are increasing the number of urban cities. You can see the number of urban places in recent census is 7,935. That has increased by almost 2,774. That is a very big number. And in percentage also, we are increasing fast. Now we are 31.16%. And this year, when we will get the new census, maybe it will cross 40 to 45%.
the world is concerned about sustainable development goals. That is not very new to us, but we have to comply with the international standards. So we see that out of 17 sustainable development goals, number 1 is basically on sustainable cities and communities. So we are basically concerned about the good quality of life when we are talking about sustainable development, urban development. So what we need to utilize the land use efficiently, because it is inefficient, whether it is horizontal or vertical land use in our cities. Then automobiles, a lot of automobiles are there, a lot of heavy population and traffic congestion. Then we have waste disposal problem, poor quality of housing, water, sanitation and hygiene. Just now before me, the presenter was talking about Delhi, but you see my study area is very small. It is Mirzapur city, a very small study area with population of 200 to 2.3 lakhs and area 38.85 square kilometer. But the problem is same that you are showing about Delhi. This city has a very long histogenetic evolution since prehistoric times. But slowly after independence, the city started losing its glory. Why? It has a lot of, you see, the secular culture of the city like Vindhyachal and Kantit Sharif, or the beautiful areas like Rajdari, Devdari, Lakhania. Very beautiful natural places are there around. The city was very historical since ancient time. You see, it is mentioned in 7 Puranas like Agni, Bhagavad, Brahma, Markandeya Puran, Padma Puran, Skand Puran, and Vaman Puran about the city, and Ramayana and Mahabharata. I will skip through all of this. This is Mirzapur city. So you see, it is located in the eastern part of UP, and a small city at the bank of river Ganges, a very beautiful city. Its southern boundary is also made by a river Ojla. And as I told you that it is very ancient city, so names are also like Ojla, Og plus Jala, means paap ko khatm karne wala. A place where if you take holy dip, your all scene is like washed away. So a lot of historical and mythological and cultural things are amalgamated in the culture of this city. This city is famous for Vindhya Trikon. You can see Trikon is made by Vindhyachal, Kalikho and Ashbhuji, and people come for holy pilgrimage of this Trikon. In the present paper, I am concerned about the present urban development of the city in terms of socio-economic, political, and environmental indicators. And also, I will try to examine the problems, issues, and challenges of the city and find out a viable model of development. In research methodology, I will show how I had done it. The first personal field survey was done around 2006 to 9 when I was doing my PhD. And then another one was done after 10 years when I got around 1 month of break. So I moved around, collected a lot of secondary data, and with this printout of satellite imagery, with the help of the people, I mapped all the land use of city. And this is how I worked on the urbanization trend, how the city evolved from ancient period. You can see this river I have already told, river Ogla in the south, and north river Ganges. So west side of this is the Vindhyachal. The city Vindhyachal, which is very ancient, known as the place of worship of goddess Mahalakshmi, and also famous for Trikon. And in the east, the main Mirzapur city that we see today, it was not found at that time. But many other, like the kingdoms of Nag and then Tarkeshwar Mahadev and many other temples can be found if you move around this line from Vindhyachal to Shastri Beach area. So then in the medieval period, another evolution of Kankit Sharif was there. And then Kantit Sharif, after evolution of Kantit Sharif, the city had a very good secular culture. There was no riot, nothing. Even Hindu and Muslim, they were living very nice with full cooperation, and they had Mirzapur
was built by donation from these cotton traders. Both Hindus and Muslims were involved, and it was built in by the it is said that they उन्होंने दान वगैरह दिया, almost एक दिन के दान से ये पूरा ब्रिज बना था. So you can understand how beautiful the city was. Then during British period, the city boundary was finally drawn, and 30 villages were taken inside this boundary. Then during British period, a lot of administrative buildings were formed in the eastern portion. So these are all the administrative blocks. And then this old road that was there even during prehistoric time, not that much developed. Now it is connected with NH7. NH7 is the longest highway of India. Then land use during 1952, land use during 80s. So you can see railways, warehouses, and new industrial units started to develop in the eastern portion of the city. By 2010, whole eastern portion was completely occupied. Based on my study area, I developed one general land use model, and I categorized them into residential, commercial, industrial, administrative, and cultural. So western portion was basically in the cultural, both Kantit and Vindhyachal, and eastern portion was residential, administrative, and industrial area, and the mixed area, the central mixed area. Lots of problems and issues are almost similar. What ma'am was talking about Delhi, it is same, like the basic civic amenities and facilities are not found. The transportation problem is there. The natural boundaries, even the ghats are not properly taken in, cleaned and all. And even the staying guest houses, they are not up to good quality. Like people, they come for whether for Hindu pilgrimage or for Muslim pilgrimage, either they have to stay in Prayagraj or in Varanasi. They do not prefer to stay in Mirzapur. So that is a serious issue. Then a lot of congested shops and lack of drinking water and sanitation can be seen. Then old heritage sites and places, they are used as garbage dumping grounds. So that is serious. Then heavy population concentration inside the city. The houses are quite dilapidated. There is no renewal program. As I am concerned with the city for last 20 years, but I didn't see much significant development there. Then the housing, this water facility. Sir, there are time limits, sir, please. May I request Dr. Akhlendra ji, may I request you kindly sum up a little fast? Okay. Conclude. Please So conclude. let me stop this and hello. SK Chaturvedi sir, namaskar. Panel discussion, So these are some sir, of the- रहना है. After in this technical session, we will start panel discussion. Technical session को continue रखिए, प्रसाद sir. Sorry. So I have stopped this sharing, and I am concluding that we need to work on the major infrastructure development of the city. And for that, I have a lot of recommendations. Since 5 minutes is very inadequate time, so I can only sum up that I have some proposed one municipal bond, like the municipal body of the city can issue one municipal bond so that people can buy, and the infrastructure development of this Mirzapur city can be financed with that. And local people's participation is required for better master plan of the city. So there are many others. So since my time is over, I would like to say thanks a lot to all of you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Akhlendra Tiwari ji. Ji. I would like to ask, if somebody has any question, kindly raise your questions in the chat box. And since we are having lack of this time which has been allotted to us, so I will request the next participants, and thank you Akhlendra Tiwari ji for giving us an valuable information regarding Mirzapur city and its evolution, how it has been started from the ancient British time period to present time land use. Now I'll request the next participant, Dr. Veerbhadra Chanbas. Sir is from DBF Dayanand College. Sir is there?
Veerbhadra sir is there? Okay. If sir is not there, then I'll request the next participant, Dr. R.K. Chaurasia, CSJM University, Kanpur. Okay. Yes, Sir sir. is, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir is Present. present and sir's topic is ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की तरफ पलायन, कारण और निवारण. मैं सर जी, आपसे सर. रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी इसको समाप्त कर दें. अपनी मेथोडोलॉजी और कंक्लूजन पे थोड़ा ज्यादा जी, जी. स्ट्रेस देते हो क्योंकि टाइम की काफी शॉर्टेज है. तो आप शुरू कर जी, सकते हैं सर. प्लीज सर. ओवर टू यू. ठीक. सर नमस्कार. सर्वप्रथम चैतन्य कॉलेज पामगढ़ एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर को कोटि से बधाई एवं शुभकामनाएं, जिनके सौजन्य से यह द्विदिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन छत्तीसगढ़ के सामाजिक आर्थिक विकास एवं पर्यावरण पर पलायन के प्रभाव पर आयोजित किया जा रहा है. मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे इसमें शिरकत लेने हेतु कुछ समय प्रदान किया. इस सत्र के परम आदरणीय चेयरपर्सन प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद सिंह जी, को-पर्सन डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी, मॉडरेटर श्रीयुत ऋषभदेव पांडे जी एवं रिपोर्टर सुश्री सतरूपा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मेरे आज के पेपर का विषय है ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की तरफ पलायन, कारण एवं निवारण. भारत गांवों का देश है. भारत की आत्मा गांवों में बसती है. भारत की लगभग 70% जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है. गांव ही हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के आदि स्रोत हैं. पहले सब मानव ने ग्रामीण जीवन ही बिताना प्रारंभ किया होगा, लेकिन नगरों का इतिहास भी अति प्राचीन है, जिसके साक्ष्य सिंधु घाटी के नगर, मेसोपोटामिया, दजला फरात, बेबीलोन आदि स्थलों में मिलते हैं. यह ध्रुव सत्य है कि ग्रामीण जमाओं के विकल्प के रूप में नगरों का विकास हुआ. नगरीकरण का मूलभूत आधार अनवरत संघर्ष है. नगरीकरण समाज के द्वारा ग्रामीण समाज को अपने अनुरूप बनाने की प्रक्रिया ही नगरीकरण है. नगरों में जनसंख्या का जमाव का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि, अप्रवास, औद्योगिक क्रांति, शिक्षा एवं जीवन स्तर में प्रगति, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन एवं संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव आदि है. गांवों की जनसंख्या ढांचागत सुविधाओं एवं रोजगार की तलाश में गांवों से नगरों की तरफ प्रवास करती है. परिणामतः नगरों में जनसंख्या जमाव से नगरों का विस्तार होता जाता है. यदि संपन्नता का सूचकांक नगरीकरण है, तो उसी के साथ साथ समस्याओं का जन्मदाता भी ये नगर ही हैं. अध्ययन क्षेत्र चित्रकूट धाम मंडल, जो बुंदेलखंड का भूभाग है, भारतवर्ष का एक अत्यंत पिछड़ा हुआ भूभाग है. यहाँ जनसंख्या पलायन ने इसके विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है. यह अध्ययन क्षेत्र चित्रकूट धाम मंडल बुंदेलखंड का वह भूभाग है जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 जनपद करबी, बांदा, हमीरपुर, महोबा आते हैं. इसका मुख्यालय बांदा में है. इस मंडल का अक्षांशीय विस्तार 24:52 उत्तर से 26:27 उत्तर तथा देशांतरी विस्तार 79 डिग्री 17 से 81:37 पूर्व तक है. इसका कुल क्षेत्रफल 14,875 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 47,70,243 है तथा इसका जनसंख्या घनत्व 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. इस मंडल का गठन 1997 में किया गया. इस भूभाग के उत्तर में यमुना नदी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को कानपुर देहात, फतेहपुर, कौशाम्बी तथा प्रयागराज जनपदों से इसे पृथक करती है, जबकि बेतवा एवं धसान नदियां पश्चिम में झांसी मंडल से इसे पृथक करती है. विंध्याचल श्रेणियां दक्षिण में मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सतना जनपदों से तथा उत्तर पूर्व में इलाहाबाद, रीवा जनपद इसे पृथक करते हैं. इस मंडल में कुल 13 तहसीलें, 216 न्याय पंचायतें हैं, जबकि 2,491 ग्राम आबाद हैं. प्रस्तुत स्रोत पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है. साथ ही अवलोकन एवं साक्षात्कार एवं प्रश्नावली का भी प्रयोग किया गया है. सन 2000 की जनगणना अनुसार मंडल में सर्वाधिक जनसंख्या बांदा जनपद में 37%, तत्पश्चात हमीरपुर में 24.50%, करबी में 20% तथा महोबा में 18% निवास करती है. मंडल में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 861 स्त्रियां हैं, जबकि साक्षरता भी संतोषप्रद नहीं है.
मात्र 48.9% व्यक्ति ही साक्षर हैं, जिसमें स्त्रियों की साक्षरता मात्र 32.3% है। बुंदेलखंड में स्थित यह चित्रकूट धाम मंडल भारतवर्ष के सर्वाधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 40.7% ही कार्यशील जनसंख्या है। शेष 59.3% जनसंख्या अपना जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर है। कार्य न करने वाली जनसंख्या के अंतर्गत घरों में रहने वाली महिलाएं, विद्यार्थी, अवकाश प्राप्त व्यक्ति, भिक्षुक, वृद्ध एवं अपंग आदि हैं। चित्रकूट धाम मंडल में आर्थिक व्यवस्था के अनुसार कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण कार्यशील जनसंख्या का 31.1% भाग